हेलो गुड आफ्टरनून समस्त तो आज क्लास आरंभ करिया तो आज क्लास मोस्ट किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखियो जोटी कि एलटीआर रो एग्जाम रिगार्डिंग रहइबो एलटीआर एलटीआर रो जोटी सीडीपी पार्ट रही छि तार ऑल जेतिक भी सब एमसीक्यू अछि सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज सब एमसीक्यू डेको आज रिवीजन मार दबा जो माने भी देखिबा कथा देखि देबे पूरा आरंभ रो शेष पर्यंत देखि देबे एवं संपूर्ण भाव जानि परिबे ओवरऑल समरी आपण माने पाइ जिबा ठीक अछि तो आमे लेट करबानी आरंभ करिया टोटल भाव 76 पेज अछि प्रति यूनिट वाइज जेमेति कि 50 रु 100 क्वेश्चन पर यूनिट अछि सेही हिसाब रे हमें ताको रिवाइज मार दबा ठीक अछि तो याकू समस्त रिवाइज मार दबे जहा फल रे आपनकर बेस्ट हेबे आपन मानक पई ओके गोटे सेकंड वेट करिवे हमें कंटिन्यू करिवा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कैमरा रो गोटे ऑप्शन अछि आई थिंक ताको टी काट देले बेटर रहइबो ताको आई थिंक कटिबनी गोटे सेकंड ना से ऊपर को भी जिबार नाही देखि देबा ठीक अछि तो क्लास लिंक गोटे हमर टेलीग्राम ग्रुप रे भी शेयर कर दोछि आपण जो माने आसिया कथा देखिया कथा देखि देबे ओके ठीक अछि चलो याको मु गतले किछि करे देथिली जो माने भी देखि नथिबे टेलीग्राम लर्निंग इज रिवाइंड एज कोन को जाय चेंज इन बिहेवियर एटा ऑप्शन 1 इज करेक्ट सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट तो द फॉलोइंग द की कंपोनेंट ऑफ द लर्निंग प्रोग्रेस कोडा की कंपोनेंट होइसे कोडा निहाती हमरे दरकार तो निहाती हमरे मैच्योरेशन हमरे एटी कोइछि ठीक अछि 10% मैच्योरेशन न हले 10% पुनर्वर्ण दरकार which is the final classical condition classical condition किए देथिले पावलोव राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर किए देथिले तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थिला थॉर्नडाइक रो ओके लॉ ऑफ रेडनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट तीनटा इफेक्ट थिला राइट which of the following the best learning by doing कोडी करा जाय सेठी हमर कंस्ट्रक्टिव जोने निजे करि कि सिहंदे राइट पेजेट देथिले ऑपरेशनल लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ ऑपरेशनल लर्निंग के देथिले ऑपरेशन ते बांध ये हमर बांद्रा वर्ल्ड है बांद्रा देथिले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग which of the following is not a principal learning not a पचाची प्रिंसिपल लर्निंग रो प्रिंसिपल न हो लॉ ऑफ रेडीनेस पूर्व कहथिले लॉ ऑफ एक्सरसाइज रे लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिसयूज अछि तो लॉ ऑफ मैच्योरेशन रे एटा आसीबनी ऑप्शन डी इज करेक्ट which method is help to promote meaningful learning कोड promote meaningful learning माने पॉजिटिव आछि दबा real and practice नेगेटिव आइटल बोले से तो पढ़िबा राइट लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय के देथिले लॉ ऑफ इफेक्ट के देथिले एबे थॉर्नडाइक देथिले तीनटा लॉ अछि तंगरो ऑपरेशनल कंडिंग के देथिले ऑपरेशनल कंडिंग ऑपरेंट कंडीशन स्किनर देथिले सेटा जोडे स्टिमुलस सहित कुकुर सहित रिलेटेड थिला concept of behavior sorry concept of behavior सहित से behavior से जड़ित थिले जन प्रॉक्सिमल जेडपीडी के देथिले जेडपीडी जेडएडी जेडपीडी एमकेओ ए सब देथिले भाइगट्स की देथिले भाइगट्स की अब करेक्ट आंसर which factor does not directly influence on learning कोटा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होनी कोटा पकोनी हेरिडिटी तो पकबनी हले डायरेक्ट इनडायरेक्टली पकाए इंटेलिजेंस इंटरेस्ट हेरिडिटी डायरेक्टली पकाए इनसाइटफुल लर्निंग के देथिले इनसाइटफुल लर्निंग फाउंडर होचंद कहलर राइट motivational is learning is important because motivational learning कोथि में important drives you to toward the goal में motivation निहाती भाବରେ दरकार the teacher can encourage learning by केमती करिया दरकार ओके
The teacher can encourage the learning by okay provide extra 30 negative ଅଛି only ଅଛି creating interest and relevance a option C is correct. Which learning theory emphasizes the stimulus response connection କୋଉଟା ଥିଲା ବେସ୍ ସ୍କିନର behaviorism theory ବ୍ରୁନର କୋଉ theory ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରୁନର discover theory ଦେଇଥିଲେ right. Cognitive learning focus का ଉପରେ focus करे cognitive तीनटा हाँ CAP cognitive affective and psychomotive जो रहितला cognitive related mental process regarding देबो affective टा emotion regarding आ उठेला CAP psychomotor टा हला हमर body regarding जीवो motor coordination regarding जीवो learning style refer to preferred by individual learning सहित right option C is correct. Scaffolding टा कोन temporary support के ଦେଇଥିଲେ ना भाइगर्स के ଦେଇଥିଲେ टिके आगुर कहउतले which one is the barrier to learning कोडा कोडा barrier anxiety one of the barrier right बाकी सब positive अछि which factor is instinct to learning कोडा which factor is instinct learning निज भीतर जोटा आसीबो reward the outside competition outside motivation instinct learning right option C is correct. Learning is most effective when it's meaningful right when it's learning is meaningful right option C is correct. According to Piaget learning occurs through Piaget को कहवा अनुसार assimilation conversion सी होची तांका theory अछि the retention in learning which factor enhance by meaningful association options B is correct. Memorize word frequently testing negative repetition be negative without understanding repetition good but without understanding is bad. Affective domain learning deals with affective learning right option C is correct. Which of these are the example of experiential learning which of these are the example of experiential learning performing a science experiment option C is correct. Which none of the concept of हावर्ड गार्डनर ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟାଇପ୍ସ ହେଉଛି 8ଟା ଟାଇପ୍ସ ର ଦେଇଥିଲେ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ତ ଅପସନ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ କାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ କରୁଛି ନା ନ୍ୟୁ ଲର୍ନିଂ କନେକ୍ସନ କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥେନ କରୁଛି ଅପସନ B ଇଜ କରେକ୍ଟ which factor does not promote learning କୋଉଟା boredom option B is negative word boredom ତ ସେଇଟା ହିଁ ହବ right. Learning for the repetition is known as repetition कोडी करा जाय माने repetition बार बार करिया था drill करबा घुसीबा option C is correct. Constructive emphasis का ऊपर constructive माने ସେମାନେ actively construct करिया ऊपर focus करंदी option C is correct right. Which psychology is linked with the behaviorist ऊपर केथिले बेब स्किनर टिके आगुर थिले option C is correct. Which is the most suitable encourage the concept of understanding which is most suitable to encourage concept of understanding कोडी आसीबो option B activity based method रे सिखले ही understanding आसीबो. Learning is process बोल के काहे की कहै छै दा continuous चले लाइफ सारा चले त तेन करी learning is a lifelong process right. Which condition is essential for learning which condition इंटरेस्ट निहते आरे रहिबा दरकार बाकी सब रहू कि न रहू इंटरेस्ट रहिबा दरकार which theory support that the learner actively construct their knowledge कोथरे माने construct करा जाय ना constructivity जोटा जिया Piaget देइथले right. Role of the feedback in learning is to be feedback रो meaning का learning क्षेत्र रे पॉइंट करबा न डिस्करेज करबा न improve परफॉर्मेंस को improve करबा right. Which of the following is a cognitive factor in learning cognitive factor कोड आसीबो mental regarding आसीबो brain regarding learning theory emphasize का को emphasize करछि social learning through observation माध्यम रे social learning ता हुए society रो experiential learning require learners to experimental learning कोठी experiment कोठी हुए ना जहा करंती सेटा रिफ्लेक्ट होय तांको बाकरे ओके जानि परंती. According to Piaget child learns best when
according to Piaget child learns best way ରେ आंसर ଯେତିକି ସ୍ଲୋ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ସାରିବାର ଅଛି ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ବେଷ୍ଟ କଥା ନହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରାୟତଃ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ବି ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାକୁ କଭର ଅପ୍ କରିଦେବି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯଦି ଆନ୍ସରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବହୁତ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେବ ଓକେ according to Piaget child learns best when according to Piaget child learn କେମିତି ଭାବରେ କରନ୍ତି ନା ନିଜେ କରିକି ଶିଖନ୍ତି allow to explore scaffolding ନୁହଁ allow to explore ନିଜେ କରିକି ଶିଖନ୍ତି option B is readiness in learning means mentally already preparedness ଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ already readiness right which of these a characteristic of the effective learning which of these a characteristic effective learning କୋଉଟା ଗୋଟେ character actively participation right option B is correct which cognitive mental cognitive ହେଲା ଇମୋସନ ସାଇକୋମୋଟର ଆସିବ ଯେହେତୁ motor skill କଥା କହିଥିଲା ତାଠି ବି ଆସିବ ସାଇକୋମୋଟର ଆସିବ ରାଇଟ୍ if the real life problem in teaching enhance କାହାକୁ enhance କରିବ if the real life problem contextual learning କୁ enhance କରିବ option C is correct next a learner center classroom promote learner center କୋଉଠି promote କରୁଛି ନା passive ତ ହବନି active involvement को promote କରୁଛି right 47 48 problem solving method helps in develop କାହାକୁ promote କରୁଛି problem solving critical thinking ନିଜେ କିଛି କରିବା repetition ତ ହବନି discipline ହବନି critical thinking को ସେ promote କରିବ right motivation help in learning by motivation କାହାକୁ help କରୁଛି motivation ନିହାତି ଭାବରେ increasing engagement को promote କରିବ self learning can be promoted by self learning କେମିତି promote କରିବ promoted by providing learning resources self learning dictating the ହବନି continuous lecturing ହବନି restricting option C is best ଅଛି right बाकी सब नेगेटिव ଅଛି पॉजिटिव नेगेटिव बाछिबे जदि भी प्राय 80% क्वेश्चन सीडीबी रे सॉल्व हो जिवो which of the following theory emphasize the internal mental कथा आसले कोन आसीबो mental process असला माने cognitive आसीबो cognitive mental process माने cognitive right option B is correct answer which of the following character meaningful question कहे meaningful learning memorize the negative word repetition with negative without understanding न बुझिबा होची बुझिबा सहित समान negative word connect with the prior knowledge a best अछि option C is correct without interest in learning hapani right 53rd peer learning is example of peer learning that collaborative বা cooperative learning option C is correct which is not a stage of Piaget cognitive development SPCF ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ pre-optional ଅଛି concrete ଅଛି formal ଅଛି conditional ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ SPCF ହେଲା sensory motor pre-optional concrete ଆଉ ଗୋଟେ formal right ଚାରଟା ସ୍ଟେଜ ଦେଇଥିଲେ latent learning was demonstrated by କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଟଲମ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ latent learning occurs faster କେତେବେଳେ learning ଟା faster ହୁଏ learning occurs faster irrelevant there is distractor no ଯେତେବେଳେ learner ଯେତେବେଳେ motivate ହେଇଥାଏ learning faster reinforcement use after every correct response after every correct response पर जदि correct reinforcement दिया जाउची सेटा होची continuous response reinforcement जदि किछि इंटरवल दिया जाउची ताहले ता interval reinforcement okay right next cognitive apprenticeship is useful for cognitive means माने understanding उपरे आसीबो निहाती भाबरे actively थिबो जोटी cognitive तो understanding algorithm right sorry cognitive apprenticeship useful अच्छा cognitive द्वारा कौन हुए बुझिबा न स्किल डेवलपमेंट हुए ऑप्शन बी इज भी करेक्ट আছে नेक्स्ट which of the following is essential for skill based learning कोडा skill based learning practice होचे skill based learning
which principle emphasizes the student activity in constructive knowledge? Constructing knowledge. Constructing knowledge କୋଉଟା କାମ କରୁଛି? construct lecture base ରେ construct ହବ ନା constructivism ରେ ହବ? constructivism ରେ knowledge construct ହବ ଜିଆ ପେଜ ଦେଇଥିଲେ belongs to analyze କୋଉଠି ହୁଏ? କୋଉଠି ଆସିବ? knowledge analyze mean comprehension na higher order thinking ne haba higher order thinking re option C is correct. Look Tapson in theory, which factor least affecting learning? कोई factor to least कम प्रभाव पकोछि सबुठारु? तो next, which factor least affecting learning? least affecting learning कोडा आसीबो? student hairstyle ये किछि प्रभाव पकेबो ना? option C is correct. Right, next. Learning disabilities are associated with learning disabilities are associated का सहित जड़ित न्यूरोलॉजी सहित disability टा न्यूरोलॉजी और डिजीज भलिया which of these are example of extra बाहरिया motivation कोडा प्राइज पे पढ़िबा सेटा ही extra motivation. right, option B is correct. आज well structured learning is environment should be केमती हमार को well structure रे encourage option C is correct. encourage and only negative अछि एटा डी हबनी. explanation भय तरीके unpredictable ना option C is best अछि. right, the constructive view of learning is most influenced by constructive किए थिले जा पेजेट थिले. okay, से कहथिले first thought second language first thought ऊपर से फोकस करथिले. which of the following enhance the long term कौन कहला long term learning कोडा long surface learning deep learning टा होछ गुड long term learning. right, option C is correct. chunking is a memory unit based. chunking means माने किछि इनपुट किछि पार्ट डिवाइड करबा से होछ chunking. ला स्कैनिंग कहले जोडे कि वर्ड खोजि वाला स्कैनिंग chunking माने मीनिंगफुल पार्ट डिवाइड करबा chunking. ओके, स्कीमिंग माने जिस्ट जाने वाला स्कीमिंग. which of these improvement metacognition skill ने सेल क्वेश्चन निज को निज भाबीबा चेन क्वेश्चन करबा. recency effect means माने रिसेंट आइटम को बेटर हर माने रखिबा. recency mean recent item. recent correct. which learning domain includes the emotional response? को learning domain sta include करछि emotional response को? emotion कोडी आसीबो टिके ब्रो को affective रे आसीबो. right, role of the curiosity in the learning टा कोन हबो? एनएस learning दा एटा होछि curiosity कोडी आसीबो जेते curiosity also माने motivation enhance the motivation. right, option C is correct. scaffolding or temporary support until the mastery supporting learner until the mastery. option B is correct. learning to learn is goal of learning to learn. option B तो हबनी. lifelong learning to learn means option C positive आछिया कथा lifelong learning. which theory emphasizes the stages of the moral development ଦେଇଥିଲେ Kohlberg. right, option B is correct. तीनटा स्टेज थिला हला प्री ऑपरेशनल आउट हला पोस्ट ऑपरेशनल. which theory effective from for visual learner पे कोडा थिला best watching diagrams सेटा ही बेस्ट रहइबो effective for visual learner watching diagrams. right, learning through discussion माध्यम रे कोड आसीबो ना मेमोराइज त होने क्रिटिकल थिंकिंग आसीबो डिस्कस करिवा द्वारा कोन करिवे. लर्निंग द काइनेटिक माने बॉडी माने मूवमेंट करके लर्निंग करंदी. राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. which learner activity help to develop collaboration में group work collaboration a cooperative learning. option B is correct. the process of reflecting on one's own thinking is called निजे को निजे थिंकिंग करिबा जोडे पूर्व क्वेश्चन थिला बेटा का ऑप्शन निजे को निजे क्वेश्चन करिबा बा चिंता करिबा. ऑप्शन ए इज करेक्ट.
The spiral curriculum was introduced by spiral curriculum किए देते ब्रूनर देते spiral curriculum option B is correct. Which technique help to transfer learning in new situation? New situation is जो transfer होची learning टा सेटा कौन कहिबा drill and practice आ गोटे से ये को प्लेस को उठा होची generalize हवा सिद्धांत रे उपनीत हवा generalization हबो तर for better learning outcomes a teacher should कौन करिवा दरकार कौन करिया दरकार adapt to student needs student need को adapt करिया दरकार option C is best. Learning plateau refers to learning plateau refers to learning plateau कापर रिप्रेजेंट करछि learning plateau रा learning plateau देखि देबा टिके temporary stagnation को रेफर करछि learning plateau रा temporary stagnation ठीक अछि या ऊपर टिके देखि देबो learning plateau ऊपर a child repeating the learn behavior without understanding so repeating भाबरे करछि त सेटा कोन हबो rote learning without understanding माने rote करछि जे ओके transfer of means जोटा generalization meaning थिला transfer of learning means generalization option was correct. Which factor is promotes better classroom learning? Which factor positive environment based भाबरे promote करिवो promote better classroom correct. Which is example of the negative reinforcement? Which is example of negative reinforcement? कोडा आसीबो following the positive giving praise ये भी positive. When a student improves giving punishment negative reinforcement कले हाँ giving punishment टा भी but it is remove a burden माने पिलार गोटे जो burden रहउची स्टूडेंट improves करथबो सेटा भी गोटे हमें सेटा ही पॉजिटिव आसीबो एटी नेगेटिव रेनफोर्समेंट कोडा गोटे पुनर्बलन हला नेगेटिव होतबो किंतु जोटे ताको आगु को बढ़िया पे सहायता करथबो. Which strategy help to solve learners? Which strategy help to slow learners? Slow को कोडा आसीबो बेस्ट आसीबो ताको पुणी अथ टीचिंग दबा सेटा ही बेस्ट रहइबो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Who said learning is a process of construction? Active construction कथा के कहितले constructive के थिले Piaget थिले तो सही कहितले first thought second language develop होय ताको दता Vygotsky opposite. Which factor is least importance in learning? कोटा least importance कहार least importance रही छे जेंडर पुओ को जेंतु से किछि फरक पकायनी ओके मोटिवेशन फरक पकाय एनवायरनमेंट ए सब फरक पकाइबो. How can student learn problem solving better? तर रियल लाइफ सिचुएशन सहित देले सेमने भला भाବରେ शिखिबे राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंजाइटी ड्यूरिंग द लर्निंग कैन कॉज ऑफ एंजाइटी टा कोन करे परफॉर्मेंस को रिड्यूस करे एंजाइटी गुटे नेगेटिव वर्ड ओके एंजाइटी रिड्यूस करे परफॉर्मेंस को यूज ऑफ द मल्टीपल सेंस जेते मल्टीपल सेंस यूज है कोन इंप्रूव हबो कोन कंफ्यूजन नो बॉर्डम भी नो रिटेंशन ऑप्शन सी इज करेक्ट रिटेंशन माने इंप्रूवमेंट हबो. Which component is essential in the learning circle? कोडा निहाती होबे दरकार मेमोराइज गोसिबा नो कंपटीशन नो फीडबैक दरकार कोन भूल रहला कोन नै फीडबैक निहाती होबे दरकार ये बेस्ट हला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन विशेष और फॉर्मेटिव देखा जाए ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट. लर्निंग गोल मोस्ट भी केमती होबा दरकार स्पेसिफिक होबा दरकार जाको मेजर करा जाय पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. टीचर शुड असेस प्रायर नॉलेज टू टीचर शुड असेस प्रायर नॉलेज टू केमती टीचर असेस करबा दरकार प्रायर नॉलेज टू इग्नोर नाही इग्नोर करबा दरकार नै मैच इंस्ट्रक्शन ऑप्शन देखि देबा मैच करबा दरकार प्रीवियस नॉलेज सहित प्रायर नॉलेज से मैच करके पढ़ाइबा दरकार ओके तबे जाय कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट हे बारियो. Which type of learning is most useful for daily life? Which type is most useful for daily life? Daily life रे कोडा विशेष भाव रे जोटा जास्छि सेटा कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग रे जेबो राइट. Continuous assessment in learning help in
କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭେବଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଏନହାନ୍ସ କରେ। ଓକେ, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇଥାନ୍ତା, ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍, ସେଟା ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ରାଇଟ୍, ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ achieve personal growth and understanding, option C is correct. Gaining certificate ପାଇଁ ନୁହଁ, passing exam ପାଇଁ ନୁହଁ, pledging other ପାଇଁ ନୁହଁ, ultimate goal ହଉଛି achievement personal growth ପାଇଁ। 100 क्वेश्चन ସରିଯାଇଛି ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉଟା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 100 क्वेश्चन ଆସିବ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ଅପସନ, ଅର୍ଥାତ ୟୁନିଟ 2 ଅର୍ଗାନାଇଜ ଲର୍ନିଂ ଯୋଉଟା ରହିଛି, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, तापर लर्निंग सेंट्रिक। फर्स्ट यूनिट जोटा थिला अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग हले, सेतरे पियाजेट थिले, बाइगोट्सकी थिले, तापर कार्ल रोजर्सकर कथा सैचुरेशन टास्क ए यूनिट रिगार्डिंग थिला। फर्स्ट 100 क्वेश्चन ऑलरेडी फिनिश। नेक्स्ट टोटल 4टा यूनिट अछि, 4टा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि 600। वर्तमान बेस समय हेनी, आई थिंक 40 मिनिट 20-30 मिनिट हेइथो, तो बाकी अल्प समय भितर 2 घंटा कि 3 घंटा भितर टोटल सीडीबी को सारी दबार अछि, जोटा कि आपण मानक बेस्ट रहिबो, मो पे बेस्ट रहिबो। ठीक अछि, नेक्स्ट बा 114 गोटे स्क्रीन 27 मिनिट है से 27, बाकी से समय लगे लखे जो क्वेश्चन अच्छी अधा घंटे पर यूनिट सरी जीव, 2-3 घंटा भितर देखीदे, रिविजन प्रैक्टिस में बेस्ट रहिबो। ओके चलो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोटा ऑर्गेनाइज बेस्ट रहिबो, जोटे मैक्सिमम आउटकम आसी पारथबो सेटा ही ऑर्गेनाइज लर्निंग रो एक्टिविटी हम नै परिया। को मेथड बेस्ट रहिबो? एक्टिव पार्टिसिपेशन, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन नो, डिस्कशन मेथड समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेशन करि परिबे। राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मॉडल्स इज द फैसिलिटेटर? टीचर मॉडल इज द टीचर फैसिलिटेटर, कोडी रहिबो टीचर एज फैसिलिटेटर? कंस्ट्रक्टिव नॉलेज लेक्चर मेथड टीचर सेंटर नो, ऑप्शन सी इज बेस्ट अछि। कंस्ट्रक्टिव मॉडल जे आप प्रेजेंट करो, जोटे टीचर आज फ्रेंड फिलोसोफर गाइड फैसिलिटेटर रहि परिबे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो लर्निंग शुड बी फोकस प्राइमरी ऑन का पर फोकस करिया दरकार? ऑर्गेनाइज लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी इज लर्निंग रेफर्स टू स्पाइरल अप्रोच का को इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी नो, लर्निंग कंटेंट नहीं आंसर इज बी, सेटा ही हबो, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ओवर टाइम, स्पाइरल अप्रोच टू लर्निंग रेफर्स टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द मोस्ट सुइटेबल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग पे कोटा बेस्ट? कोलैबोरेटेड माने मिलमिशी शिक्षा पे ग्रुप डिस्कशन होची बेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटीग्रेटेड लर्निंग हेल्प, इंटीग्रेटेड का को विशेष प्रमोट करछि, हेल्प करछि, होलिस्टिक को ही करबो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटीग्रेटेड लर्निंग। स्कैफोल्डिंग मींस टेम्परेरी सपोर्ट लर्निंग थ्रू द स्ट्रक्चर सहित किछि उटा सपोर्ट रहइबो। एमके ओ जे कि मोर नॉलेजेबल पर्सन ही सपोर्ट दे परिबे। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग? एक्सपेरिमेंट कोठी हेबो, कोटा गोटे एक्सपेरिमेंट लर्निंग रो, जोटे फील्ड ट्रिप पे कले किछि उटे नुवा एक्सपेरिमेंट आसे, सी ऑप्शन सी इज करेक्ट आसीबो। ऑर्गेनाइज लर्निंग थ्रू द पीयर टीचिंग माध्यम जोटे लर्निंग हुए सेटा को टाइप रो ना? कोलैबोरेटिव लर्निंग बा कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी सब काठी रोट लर्निंग नेगेटिव, पैसिव भी नेगेटिव, कॉम्पिटिटिव भी नेगेटिव, कॉम्पिटिटिव मोड केबे करिबेनी। Which one of the following the help to better retention of learning? Which one of the following the help in better retention of the learning? कोडा गोटे better यूज मल्टीपल सेंस को यूज करबा, एटा बेस्ट अछि। एटा न बुझी कि रिपीट करबा हो जे घुसिया पद्धति सहित समान, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Next, thematic approach to learning help student kahaku help କରୁଛି a thematic approach to learning help students now see connection among the subjects connection subject ଭିତରେ connection ରହିବା ଏଟେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ positive response ऑप्शन 1 नेगेटिव अछि कॉन्सेप्ट गोटे सिंगल सब्जेक्ट गोटे कॉन्सेप्ट करबा लर्न आइसोलेशन भितर रही कि लर्न करबा ना ए सब नेगेटिव अछि बाकी ऑप्शन सी इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट प्रमोट्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इंक्वायरी कोटा आसीबो एक्सप्लोर करबा होची इंक्वायरी करबा सहित समान ऑप्शन बी इज करेक्ट मेमोराइज नेगेटिव डिक्टेशन नेगेटिव टेक्स्ट बुक रीडिंग ये भी नेगेटिव द पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग इन क्लासरूम फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग जो करा जाए तार मेन पर्पस कोन ना फैसिलिटेट कोऑपरेटिव भाव से लर्न करें ऑप्शन सी इज करेक्ट लर्निंग ऑर्गेनाइज अराउंड द रियल लाइफ प्रॉब्लम सहित लर्निंग ऑर्गेनाइज अराउंड द रियल लाइफ प्रॉब्लम तो रियल लाइफ सहित जोड़ा द्वारा कौन हम ना सब्जेक्ट सेंटरिंग हम नहीं नहीं रियल लाइफ टा गोटे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो राइट ऑप्शन वाइज करेक्ट रियल लाइफ जी सब प्रॉब्लम सहित आसो प्रॉब्लम सहित जिते फेस करेंगे से लर्निंग हम राइट व्हिच इज द मोस्ट स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कोडा आसीबो स्टूडेंट सेंट्रिक लेक्चर नेगेटिव प्रोजेक्ट मेथड डिक्टेशन नो ऑप्शन सी इज करेक्ट प्रोजेक्ट देला पर पिला माने निजे निजे मिसिकी सिखिकी करिवे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनेबे मल्टी सेंसरी लर्निंग मीन्स इन्वॉल्विंग ऑल रिलेवेंट सेंसेस सब सेंसेस सेंस गुडा को यूज करके से माने लर्न करिवे पंचेंद्रिय को बेस करके व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इज द बेस्ट रिटेन कोडा गुडा बेस्ट व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इज द बेस्ट रिटेंशन ऑडिटरी नो विजुअल नो काइनेटिक लॉजिक ऑप्शन सी इज डी इज बेस्ट activity based method learning by the role of in constructive classroom the role of the teacher in constructive classroom into कौन आसीबो the role of the teacher in constructive classroom रे को टाइप रो फ्रेंड क्लास फिलोसोफर गाइड आसीबो ऑप्शन सी इज करेक्ट फ्रेंड फिलोसोफर गाइड टीचर को काम ही से फ्रेंड फिलोसोफर गाइड ही काम कर जेबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल फॉर द इंक्लूसिव लर्निंग सुटेबल फॉर इंक्लूसिव लर्निंग कोड आसीबो यूनिफॉर्म मेथड समस्त को समान समान यूज करबा नाय डिफरेंस पिलांक पई डिफरेंस इंस्ट्रक्शन दबा राइट इंक्लूसिव एजुकेशन कोन होय ना हमर पीडब्ल्यूडी पिला माने थांती जनरल पिला माने थांती सब ऑल टाइप्स पिला माने थांती तांकर जहार नीड जो बड़ी से बड़ी इंस्ट्रक्शन दबा दरकार ऑप्शन तेन सी इज करेक्ट लर्निंग आउटपुट शुड बी लर्निंग टा केमथि हेते बता कर मेजर करा जाय परथो ऑब्जर्व करा जाय ऑप्शन सी इज करेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बेनिफिशियल यूजेस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को टाइप रो हवा दरकार ना रियल वर्ल्ड रो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग हवा दरकार तार प्रॉब्लम को एनहांस करे प्योर असेसमेंट ना कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव स्किल को राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट राइट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास हेल्प का को करे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास ब्रेनस्टॉर्मिंग चलन देखि देबा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास हेल्प इन ब्रेनस्टॉर्मिंग माने ब्रेन भीतर किछि उडा हबो तो नियाति पूरा which of these is not a character good learning or good could not characteristic होचा छे यूनिफॉर्म फेस जो स्पीड टा समस्त यूनिफॉर्म समान न था नॉट ए characteristic ऑप्शन बी इज करेक्ट 25 टा क्वेश्चन सहिला 26 नेक्स्ट which strategy promotes self learning कोटा प्रमोट करछि आसेनी निजे जो पिलान को असाइनमेंट देले से माने किछि करंती आसेनी प्रोजेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट तो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम गिव्स इंपोर्टेंस टू काहाबर विशेष और इंपोर्टेंस दोजे चाइल्ड सेंट्रिक तो चाइल्ड नीड और इंटरेस्ट पर निहाते हबरे से इंपोर्टेंस दबो ऑर्गेनाइज लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज हेल्प इन ऑर्गेनाइज लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज हेल्प इन ऑर्गेनाइज लर्निंग enhance the practical skill ऑर्गेनाइज जोटे
करिवो से कोन करिवो प्रैक्टिकल स्किल को से एनहांस करिवो ऑर्गेनाइजेबल लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेबल लर्निंग जोटा रहउची से डेवलपमेंट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन ताकू डेवलप करिवो निहाती भाबरे ऑप्शन सी इज करेक्ट व्हिच बेस्ट रहइबो एक्टिविटी बेस्ड मेथड सेटा ही बेस्ट सब सबुठु भल भाବରେ चिंता करिया पे एक्टिविटी बेस्ड मतलब किछि करि फॉर डिफरेंशिएट लर्निंग व्हिच ऑफ द डिफरेंशिएट लर्निंग वेराइटी एक्टिविटी इन द वेराइटी लर्नर ପାଇଁ सेटा बेस्ट रहइबो ऑप्शन सी इज करेक्ट व्हिच वन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द रिफ्लेक्टिव लर्निंग कोठी आसीबो ना जर्नल जते बाकी तो ग्रुप वर्क नो वर्कशीट भी नो रेपुटेशन रो जर्नल लॉग्स जर्नलिज्म माने जो जहां भी करंती तांग रिफ्लेक्ट हुए तांग कार्य रे सेटा प्रतिफलित हुए ऑप्शन सी इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर द इंक्लूसिव लर्निंग कोटा इंक्लूसिव लर्निंग को जाउशी एंश्योर करूशी इग्नोर करिवा नो ट्रीटिंग ऑल चिल्ड्रन आइडेंटिकली एवड किछिटा पॉजिटिव अछि देखि देबा यूजिंग मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शन ऑप्शन सी बेस्ट रहइबो सी मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शन देबो कारण विभिन्न टाइप रे पिला अछन इंक्लूसिव एजुकेशन रे तो सेमन को आवश्यकता अनुसार इंस्ट्रक्शन देबो यूजिंग मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शन which tool help to tracking the learning progress of student which tool help को tool ला विशेष रे हेल्प करिवो but option the main of the organizing group activities main aim कोन रहइबो organizing group activity रो promotes cooperation and teamwork को promote करिवो right option C is correct a well organized classroom encourage कहा को करियो ए वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम ओडा भलो रे ऑर्गेनाइज करथबो ऑर्गेनाइज हेकि थले स्टूडेंट माने भलो भाबरे एंगेज हेकि से माने पढी परिबे टीचर सेंट्रिक हबने नेगेटिव वर्ड राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एनकरेज द स्टूडेंट कहा को एनकरेज करिवो ना कंस्ट्रक्ट करिया पे देयर नॉलेज ऑप्शन सी इज करेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज वुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू बी एमटी हबा दरकार ऑप्शन सी इज करेक्ट which of the following barrier कोड आसीबो इफेक्टिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रो कोड ओडे बैरियर एनकरेज क्वेश्चन पॉजिटिव वन साइज माने वन साइज फिट ऑल अप्रोच ना गोटे साइज समस्त फिट हेबेनी डिफरेंट दरकार डिफरेंशिएट टास्क ये पॉजिटिव अछि ऑप्शन सी इज नेगेटिव राइट समस्त में वन साइज इक्वल फॉर ऑल ना which method promotes experiment learning best which method promote experiment को कोडा बेस्ट माने प्रमोट करछि एक्सपेरिमेंट करबा पूर्व थला सेम टाइप रो क्वेश्चन फील्ड वर्क रे जबा फील्ड ट्रिप रे जबा सेटा गोटे एक्सपेरिमेंट आसे एक्सपीरियंस आसे राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट द मेन पर्पस असेसमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग इज असेसमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मेन पर्पस कोन मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटराइज करबा बाकी सब देखियो नेगेटिव पॉजिटिव जते बाछि देबे भी प्राय सीडीबी रे which of the following the least interactive सबटु कम माने इंटरैक्टिव विशेष भाबरे डिबेट तो सब पिला एक्टिवली पार्टिसिपेट कर परियो रोल प्ले रे ग्रुप टैक्स भी लेक्चर मेथड न हो केवल टीचर सेंट्रिक हबो सेटा मोंडिया मेथड प्योर ट्यूटरिंग इज हेल्पफुल प्योर संग साथी माने निजे निजे सिखिबा बा संग साथी बिंगो भितरे सिखिबा स्टूडेंट लर्न बेटर फ्रॉम प्योर ऑप्शन इज करेक्ट an inclusive classroom learning activity should be केमती हबा दरकार inclusive classroom रे फ्लेक्सिबल हबा दरकार एंड डाइवर्स विभिन्न चिंता को बेस करके कंटेंट को नै कि हबा दरकार फ्लेक्सिबल हेतबा दरकार नमनी हबा दरकार एनसीएफ रे को जाय छै फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग स्टाइल कंसीडर केमती हबा दरकार ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग बाय ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग स्टाइल ता केमती हबा दरकार यूनिफॉर्म लर्निंग नो यूनिफॉर्म समस्त समान नो स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी नो फिक्स्ड टीचिंग मेथड भी नो एटी मिक्स हे थांता जदी भले थांता इंडिविजुअल डिफरेंस इज बेस्ट सब पिला के भीतर इंडिविजुअल डिफरेंस रही छी तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ए जोन रियल लाइफ एग्जांपल द टीचिंग हेल्प का करिवो रियल लाइफ एग्जांपल ओडे विषय वस्तु को बुझिया पे एनस द अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन सी इज करेक्ट ए चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन केते भला भाबरे बुझी परियो A child learn best when learning is enjoyable. Learning टा जतबे enjoyable हबो सेतबे ही child भला भाबरे बुझी परिबो. Which of the following support meaningful learning? कोटा गुटे meaningful learning को support करछे
ଦେଖିଦେବା ବାକି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ, କନେକ୍ଟିଭ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼େଇବା ମାନେ ମର୍ଜ କରିକି ପଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଆରାମରେ ହେଇପାରିବ। which of the following the best least suitable for while organizing learning? Organizing learning କେତେବେଳେ ହବ? Organized learning ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଖରାପ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏଠି କହିছে ରିଏଲ ଲାଇଫ ଟାସ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେବା ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସରି ଏଠି লিস্ট সুইটেবল କହିছে, লিস্ট সুইটেবল মিন্স নেগেটিভ ଆସିବା କଥା। ଦ୍ୱାରା ହବ ରିଏଲ ଲାଇଫ ଟାସ୍କ ଏ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଦ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କାହା ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ସ୍କିଲ ର ଡେଭଲପ ହେବ। ସି ଅପସନ୍ ସି ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମେଥଡ। ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମେଥଡ କୋଉଟା ଗୋଟେ? ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରୁଥିବେ କୋଉଟା ହବ? ଆନ୍ସର ଇଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ, ରାଇଟ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ କରିପାରନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରୁମ ଲର୍ନ ସୁଡ୍ ବି କେମିତି ହେବା ଦରକାର? interactive and engaging, option C is correct. Learning by doing is also called learning by doing, किछिटा करिकि सिखिबाटा कहूचे। एक्सपीरियंस theoretical नुह, experiential माने करिबा द्वारा एक्सपीरियंस आसीबो। तो एक्सपीरियंस क्वेश्चनिंग मीन रोल ऑफ क्वेश्चन not fear confusing student नुह, करिया पे क्वेश्चनिंग करा जाय ऑर्गेनाइज लर्निंग रे। learning planning, learning activity leads to involved learning. In planning, learning activity leads to ownership and responsibility को promote करे, right? Option C is correct. Which learning activity encourages problem solving? Which learning activity encourages problem solving encourage करूची? Which learning activity encourages problem solving? Problem solving को किए करिबो? Project work ही किसी गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करियो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रोल ऑफ द टीचर इन ग्रुप लर्निंग इज अवॉइड करा जाय परिबनी, मॉनिटर एंड फैसिलिटेट करा जाय परिबो। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। टीचर काम होउची फैसिलिटेटर, मॉनिटर करिवे, फैसिलिटेट करिवे, फ्रेंड हिसाब रे रहिबे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑर्गेनाइज लर्निंग अराउंड द स्टूडेंट इंटरेस्ट हेल्प टू ऑर्गेनाइज लर्निंग रे कोन हबो? एनास सब पॉजिटिव नेगेटिव आछिबे जदी भी हेजिबो। ओके, डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट तो करा चाहेनी, वेस्ट टाइम, स्किप करिकुलम ये हबनी, सबुटा नेगेटिव अछि। ए मेजर बैरियर माने गोटे बाधक इफेक्टिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रे। फ्लेक्सिबल तो ठीक अछि, टीचर सपोर्ट भी रहबा दरकार, यूज ऑफ द विजुअल। ऑप्शन सी इज माने नेगेटिव अछि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोनोटोनस माने सिंगल मेथड यूज करबा, सी नेगेटिव। मल्टीपल मेथड यूज हे पारिबो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग? एनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग ऊपर कोडा विशेष भाबरे एनकरेज को होछि? Critical thinking, debate and discussion. Option C is correct. To make learning meaningful, a teacher should use real life example. नहीं होगा अभी, हबो नहीं अभी। Use real life example and activities. ऑप्शन बी इज करेक्ट। टीचर केमते हो दरकार लर्निंगफुल माने लर्निंग मीनिंगफुल पाए रियल लाइफ एग्जांपल सहित क्लास हबा दरकार। गोटे मिनिट। ऑर्गेनाइज लर्निंग रे केमते हबा दरकार? एक्टिव इन्वॉल्व हबा दरकार, राइट। Organized learning children should be active. Which is the most effective for the long term retention? Which is the most effective? Code effect na making no lectures no option hands on activity निजे निजे हाथ रे करी की एक्टिविटी जानिबा होची लॉन्ग टर्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एड्स इफेक्टिव
Okay, next question jiba. Effective classroom management adds in effective organized learning के ऊपर effect पकेगा. Okay, right option C is correct. Next, learning goal should be केमती होगा दरकार clearly defined होइते दरकार set होइते दरकार माने आगुरु स्थिर होइते दरकार सेही best रहइबो. Learning goal should be clearly defined and shared. Option C is correct. सॉरी म्यूट हो जाइतला. ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. ग्रुप वर्क इंप्रूव्स काहा को करे कम्युनिकेशन को. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके चलो. हेलो हेलो वॉइस ऑडिबल अछि जଣା पड़ुछि तमे आपको जिबा. ओके ठीक अछि. नेक्स्ट सॉरी वो 23 पेज घंटा हेइनी तो 200 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉरी वालानी. नेक्स्ट यूजिंग आईसीटी हला इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा को प्रमोट करे एनहांस लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करिवो बा हेल्प करिवो. राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाउ शुड ए टीचर हैंडल मल्टी लेवल लर्नर्स. टीचर केमते मल्टी लेवल लर्नर को सेमती हैंडल करिवो ना यूज डिफरेंट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट पिला को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देकी बा काम रे लिप्त करी से एंगेज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी को कोडा प्रमोट करछि ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. प्रोजेक्ट माध्यम रे से ही प्रमोट क्रिएटिविटी. रिफ्लेक्टिव लर्निंग हेल्प्स इन कोउद्रे करिवो डिफरेंट लर्निंग एमा हैबिट न हो हैबिट डीप अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ इवैल्यूएशन बाय रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रमोट करिवो. राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट. वन बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग द्वारा कोन माने बेनिफिट होछि कोऑपरेटिव पिला पिला निज निज भितर जदि सिखु छन इज करेक्ट. व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग. क्लियर गोल निहाते भरे रहबा दरकार स्टूडेंट माने पूर्व स्थिरीकृत होइतबा दरकार. पिला के पास उचित नुह सब एक्टिव रहबा उचित. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट which practice support inclusive education the most. Which practice support inclusive education the most. Inclusive education कोडा most support कोर्से. Adapt learning materials identify worksheet. Inform method ignore special needs जहार अछि ताको इग्नोर करबा तानो adapt करबा learning materials को different learning material अछि ताको adapt करबा. ऑप्शन should be केमति बेस्ट हेबा दरकार. Assessful learning for माने लास्ट जोड़ा करा जाए. ओके और रैंक परफॉर्मेंस ऑप्शन रैंक असेसमेंट फॉर लर्निंग सॉरी सेटा ऑफ लर्निंग फॉर टा होचे मिडिल टर्म रे करा जाए. ओके कोथि में करा जाए ना इम्प्रूवमेंट लर्निंग टा को आउट के बेस्ट करिया में फॉर तो लास्ट करा जाए. लास्ट आ किसी करबनी फाइनल सेटा टर्म एग्जाम जते सब आसीबो ऑफरे आजीबो फॉर टा मिडिल टर्म रे जते आसीबो वीकली हला मंथली आसी ए सब गुडका आसीबो फॉर रे आसीबो. राइट प्ले मेथड के दिथले कैलकुलेट देथले. राइट मेथड बेस्ड ऑन द नेचुरल लर्निंग थ्रू द प्ले माध्यम जोटा लर्निंग करा जाय सेटा प्ले मेथड. ओके नेक्स्ट व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर कांसेप्ट क्लैरिटी में. कांसेप्ट क्लैरिटी में कोटा बेस्ट मेथड एक्सपेंशन विथ एग्जांपल सहित जोड़ा देबा एक्सपेंशन करबा एग्जांपल सहित. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग फॉर द रियल लाइफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग फॉर द रियल लाइफ एप्लीकेशन. रियल लाइफ सहित कोटा हबो एप्लीकेशन सहित देखि देबा मीनिंगलेस हबो ने कॉन्टेक्चुअल हबो. डेली लाइफ सहित जोटा रिलेटेड रहइबो ऑर्गेनाइज भाव रे रहइबो से कॉन्टेक्चुअल हबो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग प्रमोट्स कहा को करे ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग से डीप अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करे फिगर को नो मैकेनिकल रिपीटेशन को नो कॉपी पेस्ट को नो. ऑप्शन बी इज करेक्ट.
यूज ऑफ द टीचिंग एड्स हेल्प काहाकू करे टीचिंग एड बुझिबा पई विशेष करे एनहांस करे द ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प लर्नर टू किपरि भारे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कोड हेल्प करे लर्नर को ना इंप्रूव करे लर्निंग पई तो निहाती और ऑप्शन सी इज करेक्ट रहइबो ए टीचर एनकरेज एक्टिव लर्निंग by asking open-ended question माने open-ended question करिया द्वारा कौन हबो ना एनकरेज हुए एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिया में बाकी सब तो नेगेटिव थियो एडी ओनली नेगेटिव रीडिंग टेक्स्ट बुक ओनली पढ़ले किछि काम न असाइनमेंट ना असाइन नोट्स ए सब एते पाठ पकैबानी ऑर्गेनाइज रिमेडियल टीचिंग को जो रहि जाउथबो तार पाठ रे जो दुर्बलता रहितबो ताको मेंटेन करिया पई ओके स्टूडेंट लर्निंग गैप्स को मेंटेन करिया पई ऑप्शन सी इज करेक्ट which of the following ensure the student participation which of the following ensure the student participation ensure केमिति भारे एन्सर करबा जे स्टूडेंट सेशन करछंती साइलेंट रीडिंग नो ग्रुप टास्क देबा सेमन को ग्रुप टास्क देले सेमन सेतरे इन्वॉल्व हेबे ऑप्शन 1 इज करेक्ट टू एनहांस लर्निंग अमंग द स्लो लर्नर ए टीचर शुड enhance the learning among the slow learner a teacher should provide individual support ऑप्शन सी भी बेस्ट अछि कोटा प्रकार देखिबा ऑप्शन डी कोन अछि provide individual support is best give more homework नो होमवर्क बेसी रे पागल हे जिबा ओके ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एनकरेज का को एनकरेज करे ना एक्टिव कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज पे ऑप्शन सी इज करेक्ट which is not a learner center method कोटा learner center method जिबानी तो टीचर सेंट्रिक रे निहाती भाबरे थिबो ऑप्शन सी इज लेक्चर मेथड करेक्ट ए टीचर ऑर्गेनाइज रोल प्ले एक्टिविटी इट्स लीड्स कहा को आड को नबो रोल प्ले एक्टिविटी जदी ऑर्गेनाइज होची टीचर ऑर्गेनाइज करछंदी ना से माने गोटा एक्सपीरियंस आती अनुभूति आसीबो नाटक घट जहां भी अनुभूति करछंदी सेटा एक्सपीरियंस माध्यम रे से माने सिखि जेबे हला रोल प्ले माध्यम रे ऑर्गेनाइज लर्निंग शुड बी कंसीडर केमती हबा दरकार ऑर्गेनाइज चार प्रायर नॉलेज सहित इंटरेस्ट भी थबा दरकार ओके खाली एग्जाम पटेल पढ़ले हबनी सिलेबस स्पीड को कर देले हबनी मार्क्स को देखि देले हबनी एसो नेगेटिव अछि नेक्स्ट व्हिच मेथड इम्प्रूव लर्निंग बाय इमिटेशन कोठी आसीबो इमिटेशन डिस्कवर रे किछि इमिटेशन होइनी से माने नुवा किछि करि किछि कंत मॉडलिंग लचक करी चालिबा को मॉडलिंग अछि ताको विशेष रे आइबो सेतरा अनुकरण हुए लेक्चर मेथड नाय ये तो डिक्टेशन भी नाय ऑप्शन बी इज बेस्ट रहइबो which of the following is not a benefit of the cooperative learning रे कोडा बेनिफिट नुहे बोलचे cooperative learning peer support रहइबो सोशल स्किल मध्ये डेवलप हबो कोलैबोरेशन मतलब कोऑपरेटिव रे कोलैबोरेशन रहइबो त मेमोराइजेशन घोषिबा रेडी काम किछि नै कोऑपरेटिव रे समस्त मिलमिसि सिखिबा कथा ऑर्गेनाइज लर्निंग थ्रू द स्टोरी द्वारा हम जति किछि सिखुचंदी कोन हबो ना इंटरेस्ट बढ़िबो एंड इमेजिनेशन मध्ये बढ़िबो थिंकिंग कैपेसिटी बढ़िबो ऑप्शन सी इज करेक्ट What is the key feature of the effective learning environment? गोटे key feature कौन? Effective learning environment key feature. Engagement हवा दरकार, inclusion हवा दरकार, punishment negative, memorization negative, और street talent भी negative word. C is best. A good classroom activity should be केमती हवा दरकार? Good classroom activity should be. एटी passive हवा नहीं, active हवा कथा, active. Engage all learner option C is best अच्छी. Which of the following hinders of organized learning? कोडा गोटे hinders बाधकता थिबो ओके ओके टीचर प्लानिंग ठीक प्लानिंग रहिबा दरकार स्टूडेंट कोलैबोरेशन हबा दरकार कोलैबोरेशन वे रे सिखबा दरकार एडी कहै छै ऑप्शन क्लियर ऑब्जेक्ट लैक ऑफ क्लियर माने ऑब्जेक्ट डी टाइप रहबा दरकार यूज ऑफ एग्जांपल तो हिटर बाधक हिंडर माने बाधक तो क्लियर ऑब्जेक्ट न होले हबनी learning activity should aim to promote thinking को promote करे understanding को मदद माने promote करे option B is best effective learning activities exploration and discover को निहाते बारे promote करिवो हला effective learning टा option C is correct which of the following support metacognition in student which of the following support in metacognition student कोडा बेस्ट रहइबो
which of the following support metacognition निजे को निजे सेल्फ रिफ्लेक्शन हबो टैक्स मेमोराइजिंग हो ऑप्शन बी सेल्फ रिफ्लेक्शन निजे निजे माइंड रे जोटा हुए थिंकिंग हुए सेल्फ रिफ्लेक्शन next organized learning that uses real world tasks is called organizing learning that uses real world tasks ताको कोन कहबा organized learning real world माने आसीबो contextual option 1 is best the classroom learning दरकार learner needs in outcome based रे हवा दरकार option C is best option तो 200 ऑलरेडी सरी जाय छै ट्राई करबा आउ 300 टा 400 टा पाखा पाखी थिबो घंटा भितर ताको भी माने एंड करके सार दबा घंटा 1.5 घंटा भितर सार दबा हला ठीक अछि सीडीपी टोटल सिलेबस रे रहि छै तो हमें नेक्स्ट क्विज जेबा जो कोथरे अछि नेक्स्ट यूनिट अछि असेसमेंट 4 नंबर यूनिट अछि 4 नंबर यूनिट तापर 3 नंबर यूनिट सेमति मिसी के अछि तो जोटा भी हो सिलेबस बेस रे अछि ओके सॉल्यूशन 3 रो सी माने पॉइंट 1 रे असेसमेंट इवैल्यूएशन चलंतु क्षेत्र भी 100 अछि असेसमेंट इज प्राइमरीली एम असेसमेंट रो मुख्य काम कोन ऑनेस्ट लर्निंग को प्रोग्रेस करबे असेसमेंट हो जे सी इज करेक्ट हबो व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग टाइम रे को टाइप रो करा जाय को टाइप असेसमेंट टाइम रे लर्निंग टाइम रे तेटा फॉर्मेटिव हबो ओके राइट फॉर्मेटिव हबो टीचर लर्निंग टाइम रे एंड टर्म एंड रे जोटा करा जाय सेटा सबमिटिव पिला को जोटा असाइनमेंट नेक्स्ट कर्म माध्यम रे सिखा जाय सेटा होले सेटा कोन आज चलो डायग्नोस्टिक जोटा दोष दुर्बलता जानिया पे करा जाय आ समस्त जोटा स्टैंडर्डाइज टेस्ट करा जाय समस्त यूनिक समान क्वेश्चन रखी की स्टैंडर्डाइज टेस्ट समेटिव असाइनमेंट इज डन बाय माने स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहबे जोटा कि हमर 10th एग्जाम बड़ क्षेत्र माने कोन बड़ बड़ एक्सपीरियंस होल्डर माने क्वेश्चन करा दे स्टैंडर्डाइज टेस्ट समेटिव असाइनमेंट इज डन केते बेला करा जाय समेटिव एट द एंड ऑफ द टर्म एंड रे करा जाय समेटिव असेसमेंट राइट सीसी कहा पर फोकस करे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऊपर फोकस करे अर्थात ऑप्शन सी इज बेस्ट रहिबो राइट एटी ओनली नेगेटिव अछि राइट व्हिच असेसमेंट हेलो आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी जानिया पे डायग्नोस करा जाय माने ऑप्शन सी इज करेक्ट हले डायग्नोस करि चलला बरे पुनी आगोटे रिमेडियल टीचिंग करा जाय दोष दूरीकरण पई एटा जानिया पई केवल डायग्नोस करा जाय तापरे रिमेडियल टीचिंग दिया जाय दूरीकरण पई पोर्टफोलियो असाइनमेंट मींस तो ठीक है पिलांकर गोटे रेकॉर्ड रहे ए 5 स्टूडेंट वर्क ऑन द ओवर टाइम कोन कोन करूछि से राइट ऑप्शन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट कोटा गोटे एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट कोटा गोटे एग्जांपल रे जीवो फॉर्मेटिव माने मिड टर्म रे जोटा होतो जेमति कि वीकली क्विज मिड टर्म जते सब आसी जो माने से ये आसी जो समेटिव रे बळे आसीबो एनुअल एग्जाम मिड टर्म हला ए दीटा देखो हमर एनुअल माने समेटिव आसीबो फाइनल इवैल्यूएशन भी टर्म एंड रे आसीबो ओके समेटिव रे जीवो नेक्स्ट इवैल्यूएशन हेल्प ए टीचर को दे टीचर को हेल्प करे ना पिला को जो जानिया पे दस दुर्बलता जानिया पे इवैल्यूएशन करबा दर नो द इफेक्टिव केते अछि आपन को शिक्षाटा ताकू जानिया पे ऑप्शन सी इज बेस्ट नेगेटिव कंप्लीट सिलेबस बेस हवा दरकार इश्यू पनिशमेंट ये सब नेगेटिव वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द गुड टूल फॉर फॉर्मेटिव असाइनमेंट गुड टूल फॉर फॉर्मेटिव असाइनमेंट कोडा आसीबो गुड टूल नेशनल अचीवमेंट टेस्ट एनएटी तापर नाही व्हाट इज द फोकस ऑन द असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर इन दिबो कोथरे
ନା ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଯୋଉଟା ମିଡ୍ ମଝି ସମୟରେ ଯୋଉଟା ହଉଥିବ। ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ସେଥି ଗ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରେଡ୍ ଏଠି ଦିଆ ହଉନି। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ। Which of the following is a character of good assessment? Which of the following is a character of good assessment? कौन हवा दरकार गुड आसेसमेंट रिलायबिलिटी भैलिडिटी रहिबा दरकार यूजेबिलिटी रहिबा दरकार ऑब्जेक्टिविटी रहिबा दरकार ये सब पांचटा मेन जिंस रहिबा दरकार ओके रिलायबिलिटी भैलिडिटी भैलिडिटी मीन्स जोटा मेजर करा जाउची ताहा मेजर हे जाउची जदी से भैलिडिटी आ भैलिडिटी रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी रिजल्ट ऊपर कंसिस्टेंसी रहिबा दरकार थरे रिजल्ट माने परीक्षा कल 100 रहिला सेकंड टाइम परीक्षा कल 100 रहिला कंसिस्टेंसी सेम रहिबा दरकार पाखापाखि रहिबा दरकार oral testing is suitable for assessing oral testing रे कोथरे जीवो writing speed no communication oral टा communication रे जीवो option C is correct. An assessment that motivates learning is called assessment that motivates learning is called assess motivate जोटा assessment that motivates learning कोड हबो ना formative नहीं जोटे motivate होंदी right non performing test compared to norm test सेटा कौन हुए ना स्टूडेंट परफॉर्म विथ गोल नॉन परफॉर्म करिवे ना गोल को नहीं की ना एटा हबनी स्टूडेंट भितरे जोटा हबो आई थिंक ऑप्शन बी इज बेस्ट रहबो स्टूडेंट भितरे जोटा हबो हला कंपेयर टू स्टूडेंट भितरे जोटा की कंपेयर हुए ऑप्शन बी इज बेस्ट क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट असेस टू स्टूडेंट अगेंस्ट क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट केते बेले हुए एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम जेते बेले आसीबो ऑप्शन बी इज बेस्ट सेटा होची क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट एक्सपेक्ट जोटा एक्सपेक्ट करा जाइथो सेही लर्निंग आउटकम जदी आसी जाउची ताले क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोले कि कहा जाय which of the following does not assess the higher order thinking type रे आसीबो ऑब्जेक्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग आसीबो केस स्टडी गोटे बहुत चिंता करिया प्रॉब्लम सॉल्व करिया ପାଇଁ हेले अपन एने टाइम रे बहुत किछि चिंता करिया ପାଇଁ पड़े नेक्स्ट द मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट मीनिंग कौन ना जोड़े प्रॉब्लम को जानिबा आइडेंटिफाइड लर्निंग गैप कोडी कौन 10 बड़ा अछि गैप को जानिबा ପାଇଁ कजे डायग्नोस्टिक तापर रिमेडियल टीचिंग दिया जाय समेटिव असेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड समेटिव समेटिव कोन फाइनल असेसमेंट हेई परिबो देखिबा ऑप्शन डे टू डे असेसमेंट नो ऑप्शन 1 इज करेक्ट समेटिव माने टर्म एंड जोटा करे जे से फाइनल असेसमेंट राइट which is not a tool of assessment गोटे असेसमेंट टूल नुह चेकलिस्ट माध्यम रे चेक करा जाय यस नो जेमिति कोडा अछि नहले चाहने क्लास रेकॉर्ड स्टूडेंट बिहेवियर को रेकॉर्ड करा जाय ओके क्वेश्चनरी माध्यम रे मध्य तापर लेक्चर एटा टूल नुह राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट which assessment allow to student self reflect करिया में कोन करबा दरकार सेल असेसमेंट हवा दरकार सेल रिफ्लेक्ट में ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट which of the following promotes directed learning self directed learning हवा दरकार सेल्फ डायरेक्टेड मार्क बेस्ड तो हबनी सेल्फ डायरेक्टेड समेटिव पे भी हबनी सेल्फ डायरेक्टेड सरप्राइज टेस्ट नो पर्ली असाइनमेंट एटा ही बेस्ट रहबो ऑप्शन सी इज सेल्फ डायरेक्टेड हेबे रुब्रिक केते बडी यूज करा जाय हला रुब्रिक होची गोटे स्कोरिंग गाइड हला जोथरि पिला को स्कोर दिया जाय प्रोवाइड स्कोर क्राइटेरिया फॉर टास्क किछि करबा माने ताको किछि स्कोर दिया जाय स्कोरिंग गाइड सी होची रुब्रिक ऑप्शन सी इज बेस्ट पेयर में एनकरेज कहा को करे कोलैबोरेट लर्निंग को ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ मींस ऑफ लर्निंग यूज केते बळे हुए ना फाइनल आउटकम में जज फाइनल आउटकम में टॉर्मेंट जोटा हुए फाइनल आउटकम फाइनल रिजल्ट में ऑप्शन सी इज बेस्ट which of these support the holistic assessment holistic कोडी आसीबो ना सी रे ही आसीबो holistic स्कॉलास्टिक दीटा तक आसीबो एथरे सी रे ऑल राउंड डेवलपमेंट को प्रमोट करे से नेक्स्ट
So the following is the best assessing creativity. Okay. Open-ended question. ମାନେ ଯୋଉ creativity ଆସିବ multiple choice ରେ creativity ଆସିବନି true false ରେ ବି ଆସିବ dictation ରେ ବି creativity ଆସିବନି. Option C is correct, which is not a purpose of formative assignment. Formative assignment କୋଉଟା purpose ନୁହଁ. Monitoring progress, adjusting teaching, certifying learning, provide feedback. Formative ନ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ସବମିଟିଭ ଯାଇଥିବ. ସବମିଟିଂ ଯୋଉଥିରେ କି ଟର୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ. ଅପସନ ସି ଟା ହିଁ ରହିବ ସାର୍ଟିଫାଇଂ ଲର୍ନର. ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଠି ଫର୍ମାଟିଭରେ କୌଣସି ଦିଆଯାଏନି ଟର୍ମ ସାର୍ଟିଫାଇଂ ଲର୍ନର. ଓକେ ନେକ୍ସଟ which method is suitable for evaluating performance in sports and arts? Next 28 number. Okay. Which method is suitable for evaluating performance in sports? Sports कोड आसियो. Sports में जियाती perform best था और नियाती वाला option C is best. Assessment in constitutive classroom should केमती हवा दरकार. Assessment word process oriented or product oriented. सब तो best. Okay. Product रे तो finally जोटा हुए सेटा final टा जोटा ये for एटा C टा ही रहेबो. हला formative evaluation process oriented ଆଉ ଗୋଟେ ସବମିଟିଭ ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ. ଏ ମନେ ରଖିବା କଥା. ଠିକ ଅଛି. ନେକ୍ସଟ डायग्नोस्टिक असेसमेंट यूजफुल फॉर डायग्नोस्टिक असेसमेंट केतेबेले यूजफुल हुए एनिमे स्ट्रेंथन एंड वीकनेस को. ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हिच वन इज कोटा ଗୋଟେ नॉन वर्बल असेसमेंट कोटा ଗୋଟେ नॉन वर्बल असेसमेंट ऑब्जर्वेशन कौन सी कथा कहबा नै किछि ऑब्जर्व करिया खाली नॉन वर्बल. असेसमेंट टैक्स शुड बी केमती हवा दरकार. असेसमेंट शुड बी अलाइन्ड विथ हाउ मैथमेटिक्स रिगार्डिंग हवा दरकार. स्टूडेंट रो हाउ मैथमेटिक्स रिगार्डिंग हले नियाते आवरे से किछि भल इन्फॉर्मेशन ना ये तो रहिबा दरकार. लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहिबा दरकार. असेसमेंट टास्क जोटा दिया जिवो खाली हाउ मैथमेटिक्स सहित हला हबनी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ट अछि. ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हिच इज द टूल ऑफ सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट कोठी देखा जाय कोडा रे टूल व्हिच कोटेल यूज करा जाय. सेल्फ असेसमेंट निजे को चेकलिस्ट यूज करा जाय. हां मो एटा करछि ना ना यस निजे को निजे चेक करिया भाई यस नो बेस रे चेकलिस्ट यूज करा जाय. चेकलिस्ट इफेक्टिव फीडबैक हवा दरकार. इफेक्टिव माने फीडबैक टा स्पेसिफिक हवा दरकार कंस्ट्रक्टिव हवा दरकार. राइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अनेक्लर रिकॉर्ड जो थ्री के स्टूडेंट बिहेवियर को रिकॉर्ड करा जाए नॉट बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. असेसमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम. असेसमेंट टा को थ्रू फ्री हवा दरकार ना बायसनेस से जेमति रहइबनी पार्थक्य रहइबनी पुआ जे भेदभाव रहइबनी सब आउ सब्जेक्टिव ही हवा दरकार. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the main aim of the assessment in inclusive classroom? What is the main aim of the assessment in inclusive classroom? केमती हवा दरकार. मेन एम ऑफ द असेसमेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम सपोर्टिंग हवा दरकार. इन इंडिविजुअल लर्निंग हेतु दरकार. प्रमोट कंपटीशन को हमें नेगेटिव वर्ड कंपेयरिंग करबा नै इवन नेगेटिव वर्ड डिस्करेज भी नेगेटिव वर्ड. व्हिच समेटिव असाइनमेंट फीचर नो हला जोडे की फीडबैक फॉर लर्निंग फीडबैक एठी दिया जाय नै. फॉर्मेटिव रे फीडबैक आसे समेटिव रे आसे नि. ओके राइट. ऑप्शन बी इज समेटिव असेसमेंट फीचर नुह कहिसे. एग्जाम टर्म रे हुए परीक्षा रे मार्क रहला केते कोन सर्टिफिकेट बाइला से सब अचीवमेंट कर एप्लीकेशन करा जाय हैला आड कोर्स. तो ऑप्शन कोड बेस्ट. ऑप्शन बी. आंसर इज बी. नेक्स्ट help to continuous observation of the learning behavior. Learners behavior regarding कोडा कोडा बेस्ट आसीबो. व्हिच मेथड इज हेल्प टू कंटीन्यूअस ऑब्जर्व व्हिच हेल्प टू कंट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन आई थिंक checklist the behavior regarding. Which test is best for the assessing the reading scene? Assessing the reading skill by
कोड़ा बेस्ट रीडिंग स्किल पे ओरल एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट ये भी बेस्ट आसीबो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नो मैचिंग टेस्ट नो डिक्टेशन भी नो बी इज करेक्ट evaluation helped the student केमती हेल्प करे evaluation improve teaching method रे हेल्प करे evaluation रे teaching method maintain discipline ये discipline the negative word paper timetable evaluation help control even negative word option C टा ही best लाउची option right option C is correct peer assessment must be केमती हवा दरकार peer assessment सांग साथी भितरे हुए guided टीचर guided रहिबा दरकार okay which is an assignment strategy suitable for the young children पे कोड़ा बेस्ट आसीबो को स्ट्रेटजी टा मैं नो ड्राइंग एंड रोल प्ले सेमाने बड़ बड़ पिला सेमाने किछि करि कि सिखिबे किछि रोल प्ले करि कि सिखिबे ड्राइंग करि कि सिखिबे ऑप्शन सी इज बेस्ट ए रुब्रिक रे कोडी गुडे स्कोरिंग गाइड पूर्व कहतले रुब्रिक मींस स्कोरिंग गाइड जोथरे पिलांकर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके रखा छे सेट ऑफ क्राइटेरिया लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट राइट which of these is not a part of CC ର कोडा गोटे पार्ट न हो कहैसे कोडा गोटे रहइबो को स्कॉलरशिप रहइबो फॉर्मेटिव असेसमेंट रहइबो कंपटीशन को ये प्रमोट करे नै सीसी तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी करिवे ऑप्शन ठीक अछि ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऊपर फोकस करे नै है कंपटीशन को दूर ही रखे which tool help to assess the learning outcomes immediately after teaching which tool helps to assess learning after outcomes immediately after the teaching कोटा immediate outcome आसे हला access the learning outcomes immediately after teaching which tool help access the learning outcomes portfolio नाइ portfolio हबनी summative भी हबनी oral questioning टाइम बेस्ट रहइबो okay next next which assignment approach to emphasize learning through the learning through reflection हवा भाई which assignment विशेष रे emphasize reflection अछि माने reflective journal हबो okay option C is correct which tool is the best assess the psychomotor domain ता कोडा आसीबो ना motor coordination सहित जोडा थिबो रिगार्डिंग थिबो कोडा हबो देखि देबा ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल ही मोटर माने मोटर रिगार्डिंग आसीबो राइट परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहा को इन्वॉल्व करे परफॉर्मेंस रिकॉल टाइप एक्शन रियल वर्ल्ड टास्क सहित परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इन्वॉल्व हुए राइट और ठीक है देखा जाओ ऑल काइंड्स ऑफ लर्नर को टाइप रो पिला को सपोर्ट करे डाइवर्स फ्लेक्सिबल पिला को सपोर्ट करे हले असेसमेंट मस्ट बी all kinds of learner right option B is correct which is the learner center assessment approach learner assessment approach का कोच which is the learner center assessment approach कोडा learner centric जो थे peer संग साथी भी थिबे self assessment बारथिबो ओके ताका तबे डिस्कशन हे बारथिबो सी करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट the primary goal of the assessment कोन हवा दरकार primary goal of the assessment केमती हवा दरकार enhance learning and teaching को enhance करथिबो primary goal से ही right which tool is the best access of social skill in children which tool the best access of social skill in children best access कोड हवा दरकार social skill सहित social skills टा ऑप्शन सी टाइम बेस्ट रहइबो ऑब्जर्वेशन right which kind of assessment help to modify instruction modify करिया में कोडा बेस्ट रहइबो instruction method कोडा आसीबो देखि देबा which kind of assessment help to modify instruction method formative रे instruction को चेंज करा जाय परिबो I think option 1 is correct right CC को समस्या आइछ CC ओके देजा नोर आस्तला continuous and comprehensive evaluation जोटा कि
ऑलराउंड डेवलपमेंट ऊपर फोकस करे राइट असेसमेंट एज लर्निंग आर्ट कोन पिला माने निजे किछि करे कि सिखबे स्टूडेंट रिफ्लेक्शन रे राइट बा ताको किछि असाइनमेंट दिया हला से किछि करबे ऑप्शन बी इज करेक्ट व्हिच टाइप ऑफ असाइनमेंट प्रमोट्स द लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल गोटे लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस को जाउछि पनिशमेंट तो आसबनी ग्रेडिंग भी नुह समेटिव नुह फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव जोटा किछि सिखिबाटा लाइफ लॉन्ग ऊपर फोकस करियो राइट व्हिच इज द की प्रिंसिपल ऑफ द फॉर्मेटिव असाइनमेंट कोटा गोटे की देखिदेबा व्हिच इज द प्रिंसिपल फॉर फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव कोटा दिया जाय आगुर भी कहै फीडबैक और सपोर्ट मध्ये मिले राइट ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके समेटिव रे तो फीडबैक रो ऑप्शन किछि न थाए जोटे ग्रेडिंग दिया जाय सर्टिफिकेट प्रदान करा जाय सी आसीबो ओके तो फॉर्मेटिव कोड हबो फॉर्मेटिव फीडबैक एंड सपोर्ट राइट which of the following is not a feature of the effective feedback कोडा गोटे फीचर्स नो कहिसे ले एक्शनेबल जेनेरिक आई थिंक जेनेरिक ता हबो नो टाइमली हबा दरकार इफेक्ट तापरे फोकस ऑन द टास्क ऊपर फोकस करिया दे एक्शनेबल हबा दरकार कार्यकरी हबा दरकार द फोकस ऑफ द असेसमेंट इन कंस्ट्रक्टिव क्लास केमती हबा दरकार फोकस ऑफ द असेसमेंट इज कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इज ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बेस रे हबा दरकार कंस्ट्रक्टिव से ऑप्शन बी इज बेस्ट व्हिच असेसमेंट हेल्प टू डायरेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी अर्ली व्हिच असेसमेंट हेल्प टू डिटेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी अर्ली ओके व्हिच असेसमेंट हेल्प लर्निंग डिसेबिलिटी अर्ली लर्निंग टाको डिसेबिलिटी डिटेक्ट करिया पे आगु जाइछन्ती डिटेक्ट डायग्नोस करा जाय ओके राइट ऑप्शन बी इज बेस्ट व्हिच स्टूडेंट लीड असेसमेंट मेथड स्टूडेंट जो थे लीड करथबे सेटा को टाइप रो मेथड कोथरे आसीबो राइट ऑप्शन पोर्टफोलियो रे इन फॉर्मेटिव असाइनमेंट टीचर एक्ट केमिति करबा दरकार फ्रेंड फिलोसोफर गाइड राइट ए टेस्ट विथ प्री डिफाइंड आंसर पूर्व ऑलरेडी डिफाइंड हेतबा आंसर एंड मार्किंग स्कीम को कोन कहआ जिवो ला पूर्व जो मार्किंग इवैल्यूएशन केमिति कोन हबो डिफाइंड हेतबो स्टैंडर्ड समस्त को इक्वल हेतबो से स्टैंडर्ड रेट सब 10th एग्जाम प्लस 2 एग्जाम जहां भी हबो से ऑलरेडी प्री डिफाइंड ओके स्टैंडर्ड रेट टेस्ट आजिबो व्हाई द फ्लेक्सिबल इंपोर्टेंट इज इन असेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इंपोर्टेंट कोथि में डाइवर्सिटी अछि तेनु करी निहाती रे फ्लेक्सिबिलिटी रहबा दरकार सब वर्गर पिला अछि त फ्लेक्सिबल रहबा दरकार वैलिडिटी इन असेसमेंट which of the following best define the validity in assessment कोडा गोटे बेस्ट आ जाउ देखि दियो कोडा गोटे बेस्ट जाउ छी हेलो which of the following the best define the validity in assessment best accuracy meaningful हवा दरकार मेजरिंग इंटेंट स्किल को मेजर करा जाय परथबो एटा बेस्ट डिफाइन वैलिडिटी माने जोटा मेजर करथबो सेटा जदी मेजर होची एटी सेटा ही कहै छी जोटा एक्यूरेसी इन मेजरिंग हला राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट रिलायबिलिटी माने से कंसिस्टेंसी समान रिजल्ट आस्तो कंसिस्टेंसी थरे रिजल्ट परीक्षा करलो जति रिजल्ट आसला सेकंड टाइम परीक्षा करलो सेम रिजल्ट आसला तृतीय थरे भी जदी सेम रिजल्ट आसे सियाला कंसिस्टेंसी माने कंसिस्टेंसी जोटा आसला से होची रिलायबिलिटी व्हिच ना सरप्राइज टेस्ट कोलैबोरेटिव नो पीयर रिव्यू रहिबो बेस्ट रहिबो पीयर रिव्यू संग साथी भीतर कोलैबोरेटिव हबो सेठी ताको निज ओपिनियन रहिबो रिव्यू रहिबो आसन फॉर लर्निंग फोकस का ऊपर करिवो फोर्थ कोन होय ता सर्टिफिकेट टर्म एंड रे करा जाय बनी फॉर्मेटिव हबोनी ग्रेड्स भी सेत्री दिया जाय समेटिव रे दिया जाय इंप्रूव न्यू फ्यूचर परफॉर्मेंस ऊपर ध्यान दिया जाय इंप्रूवमेंट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऊपर फोकस करा जाय ऑप्शन सी इज बेस्ट रहबो अनेक्युलर रिकॉर्ड इज मोस्टली यूज्ड टू असेन अनेक्युलर रिकॉर्ड जोथरे पिलाकर अनेक्युलर रिकॉर्ड बिहेवियर रिकॉर्ड करा कि रहा लर्निंग आउटकम एकेडमिक मार्क नो परफॉर्मेंस सोशल पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर को रिकॉर्ड करके रखा जाए ऑप्शन सी इज करेक्ट
What is the key limitation in summative assignment? What is the key of limitation of the summative assignment? What is the key limitation of the summative assignment? Summative assignment কোন মানে summative assignment কোটে মানে কোন limitation মানে ଗୋଟେ opposite বা ବାଦକତା କହି ପାରିବା ହେଲା એટલે formative ହେଇଥିବ formative regarding ଥିବ text too long little always formative କଣ offer limited feedback feedback ଯୋଉଟା ଆସିବ କୋଉଠି ସେଠି କମ summative ରେ ଏତେ ଆସେନି ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଆସେ କୋଉଠି ନା formative evaluation ରେ ଅଧିକ ଆସେ which is text ରେ ଯିବ authentic assignment authentic ଯିବ ଦେଖିଦେବା authentic assessment based on the rote memory negative word multiple choice MCQ authentic assessment real life application based रही ये आसीजिबो correct right real life application based रही authentic assessment कहि परिया which of the following is not an example of formative assessment कोडे formative assessment नुह कहिसे formative assessment right देखि देबा चलो formative assessment example नुह weekly test जिबो sorry weekly test आसीबो sorry ये तो आसीबो formative test रे तो नुह को torment exemption C is correct next assignment of the psychomotor skill कहाँ से included psychomotor जोटा है hand motor coordination सहित जोटा होइतबो सेटा कोडा हबो ना ड्राइंग जोटा हाथ रे होची कोऑर्डिनेट मोटर स्किल द्वारा होची फाइन मोटर ग्रॉस दी टाइप रो मोटर्स अछि फाइन मोटर्स कले छोट छोट ड्राइंग करबा आतरे हमर को माने आगुठी गुडा के यूज होची जतो टिनी मोटर्स यूज होची छोट मसल ग्रॉस मोटर दौड़ी बहला पहरी बहला सेम टाइप हबो राइट दी टाइप रो मोटर स्किल अछि फाइन मोटर गोटे ग्रॉस मोटर व्हिच प्रिंसिपल द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द चाइल्ड सेंट्रिक इवैल्यूएशन व्हिच प्रिंसिपल यूज हुए चाइल्ड सेंट्रिक इवैल्यूएशन रे कोडा चाइल्ड सेंट्रिक रे स्टेट डिसिप्लिन नेगेटिव वर्ड मेमोराइजेशन नेगेटिव वर्ड रैंकिंग भी नेगेटिव वर्ड इंडिविजुअल पिलर प्रोग्रेस को देखा जाए व्हिच असेसमेंट कंटीन्यूअस फीडबैक कोडी आसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे आसे राइट इन सीसी कॉस क्वालिटी इवैल्यूएशन कॉस स्कॉलरशिप जोटे स्पॉट रिगार्डिंग जोटे बही को छाड़ दे बाकी जति सब इवैल्यूएशन रही कॉस स्कॉलरशिप आसीबो बुक्स रिगार्डिंग जति सब इवैल्यूएशन आसीबो स्कॉलरशिप रे आसीबो राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट ए रुब्रिक इज मोस्ट यूज केते बडा हवा दरकार रुब्रिक टा सब्जेक्ट इनफॉर्म टेस्टिंग मेजरिंग अटेंडेंस आई थिंक ना बीटा गाइड जोटे की गोटे सब्जेक्ट की बेस्ट सब्जेक्ट केते गोटे स्कोर रहिबो सब्जेक्ट असेसमेंट रिगार्डिंग हबो नियाते ओरे बीटा नेक्स्ट असेसमेंट दैट हैपेंड certify learning is assessment that happened after the instruction to clarify the learning yani clarify कला पर जो learning ता आसीबो सेटा को टाइप रो हला अरे सॉरी certify clarify नो certify माने torment रही हबो torment ता कोडी आसीबो torment माने summative right option C is correct which of the following is not a principle of effective assignment कोडा गोटे principle नो हो फीडबैक रहिबा दरकार वैलिडिटी रहिबा दरकार फेयरनेस रहिबा दरकार बायस रहिबा दरकार नाही पिला पिला भितरे बायनेस किंदी रखा जिवो वो भलो झियो खराब एमती त कहि हबनी जे बायसनेस करि हबनी त इफेक्टिव असेसमेंट हबनी सेतरे बायसनेस रहिबा दरकार नाही राइट असेसमेंट आज लर्निंग मींस प्राइमरी हेल्प स्टूडेंट कोन करे माने निजे पिला माने किछि करे कि सिखंते जोटा रिफ्लेक्ट नेचर रिफ्लेक्ट सेल्फ मॉनिटरिंग निजे करंती त ऑप्शन सी इज करेक्ट a checklist assessment help काहा को करे checklist मार्किंग अटेंडेंस ये आसीबो एटा हेई परिबो चेकलिस्ट या आसी छि नाइ रेकॉर्ड बेस्ड अछि रेकॉर्डिंग स्पेसिफिक बिहेवियर माने पिलांकर स्पेसिफिक बिहेवियर को से खराब व्यवहार कर छि यस नो चेकलिस्ट करा जाय से पिलाटे गुड और बैड यस नो से चेकलिस्ट करा जाय
କୋଉ ଟାଇପର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଚେକଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଥିବ ହେଲା ସେ ଭଲ କଥା କହେ ସେ ଇଏ କରେ ସେ ଇଏ କରେ ସେ ଗୋଟେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ which term refer to as the testing before instruction begin instruction begin ହବ ଯୋଉଠି which term refers to testing before जोड़े प्री असेसमेंट को जाए टेस्टिंग करा जाए प्री असेसमेंट लर्नर्स ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी रे कोठी प्रमोट करा जाए प्रमोट्स ऑटोनॉमी लर्नर्स ऑटोनॉमी को ना सेल्फ असेसमेंट रे पिलार लर्नर को ऑटोनॉमी रहइबो तो ऑटोनॉमी नियाती भाबरे रहइबो ओके निजर निजे असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट इफेक्टिव क्लासरूम असेसमेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्व कोन रहइबो इफेक्टिव क्लासरूम असेसमेंट रे मल्टीपल मेथड एंड टूल्स रहइबो मल्टीपल मेथड जेतु इफेक्टिव हेबा पई हेले मल्टीपल मेथड नियाते भाबरे दरकार राइट नेक्स्ट व्हिच इज द टूल फॉर असेसमेंट इमोशनल डेवलपमेंट को टूल टा यूज करा जाए इमोशनल को कोडी मेजर करा जाए जानि छन अनेकला रेकॉर्ड बिहेवियर को जानि थिले ऑप्शन सी इज करेक्ट हो असेसमेंट शुड बी डिजाइन केमति हेबा दरकार असेसमेंट टा रैंक वर्ड नेगेटिव वर्ड इंटीमेट करबा इंटीमेट जणे दबा हेल्प लर्नर करबा ना लर्नर ग्रो ऊपर हेल्प हवा ही बेस्ट रहइबो which of these tool support reflective thinking in learning which of the tool support kariba reflective learning reflective thinking in learning कोटा reflective thinking in learning रे portfolio टा बेस्ट रहइबो राइट assessment strategy must be केमति हेबार का assessment strategy align with learning goal regarding हेतबा दरकार assessment टा हला फिक्स हेबनी फ्लेक्सिबल हबो हला एटी इनफ्लेक्सिबल कर दे छी स्ट्रेटजी हां स्ट्रेटजी फिक्स हले भी चल स्ट्रेटजी बट इनफ्लेक्सिबल टा नेगेटिव ओके राइट यूनिफॉर्म तो समस्त पई समान टाइप रो माने गोटे टाइप रो हबनी ओके नेक्स्ट in the project based assessment learner are केमति हबा दरकार project based active involve हबा दरकार टाइप टास्क सहित राइट assessment inclusive classroom must be assessment inclusive classroom must be केमति हबा differential and flexible हबा दरकार ओके राइट which is the following is not a true about the self assessment regarding quota true no helps in self awareness self assessment help करे but no हां कैसे इनकर द responsibility ये भी करे require no teacher guidance जहां भी हेले भी रहिबो हला सेल्फ असेसमेंट कले भी टीचर गाइडेंस रहिबो हला टीचर रोल होची फ्रेंड फ्लेक्सिबल गाइड फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन केते मोस्ट इफेक्टिव केते हुए ओनली नेगेटिव वर्ड पब्लिकली गिवन टाइमली एंड स्पेसिफिक ए ऑप्शन बेस्ट बी टा ही बेस्ट रहिबो टाइमली हेबा दरकार फीडबैक एंड स्पेसिफिक हेबा दरकार which method is suitable for the evaluating group कोडा बेस्ट आसीबो ऑब्जर्वेशन peer review ओके इट इज कोलैबोरेशन माने peer learning observation with peer review assessment tool should be selected based on assessment tool should be based on केमिति हेबा दरकार assessment टा वर्किंग हवा दरकार लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बी अछि बेस्ट अछि लर्निंग ऑब्जेक्टिव राइट नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू केमति हवा दरकार असेसमेंट ऑफ लर्निंग जोटा कि टर्म एग्जाम रे जोटा हुए प्रमोट कंपटीशन गाइड फीचर न ऑप्शन सी टा बेस्ट रहबो डिटरमाइन व्हाट आर से लर्न जोटा परीक्षा छै सेटा टर्म एंड फाइनल टेस्ट करिया पे सेटा करा छै ऑप्शन सी टर्म एंड एग्जाम जमति कि 10वीं परीक्षा हला प्लस 2 परीक्षा हला बा मध्यकालीन जोटा परीक्षा हुए हला से परीक्षा गुडा को मते आसी परिबो समेटिव एग्जाम गुडा का नेक्स्ट व्हिच इज टू बेस्ट यंगर लर्नर पई कोटा बेस्ट रहइबो रोल प्ले करिवे स्टोरी टेलिंग करिवे से माने पार्टिसिपेशन करिवे अभिनय करिवे से माने सिखिबे ऑप्शन बी इज करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ ओनली रिटन असाइनमेंट कोन लिमिटेशन हला अपकारिता
only written exam ର ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଇଗ୍ନୋର oral and practical skill କୁ ସେଠି ମାନେ କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ତାର ବାଧ୍ୟକତା ବା limitation, right? Performance based assessment is most useful ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ କୁ ଯାଉଛି and application based ହଉଛି, ତେବେ ଯାଇକି ସେଟା most useful ହବ, right? Option B is correct. The best assignment support କାହାକୁ କରୁଛି? Best assignment support holistic best assignment product CCE means holistic development and learning, right? Rote memorization ये नेगेटिव है, स्टैंडर्डाइजेशन भी गोटे प्रकार नेगेटिव किंतु एटा ही बहुत समय माने कौन भल भी आम कह जो सर्टिफिकेट दिया होची ओके सी स्टैंडर्ड है पूर्व अलरेडी स्थिरीकृत होता है टाइम है मार्किंग है से जो फिक्सेबल स्टैंडर्ड टेस्ट है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये 300 क्वेश्चन अलरेडी सरी जाए से ओके किसी क्वेश्चन नहीं आसीबा ट्राई करबी आउ किछ समय भीतर क्वेश्चन सारिया भाई 22 पेज जाए टोटल 76 पेज अच्छे ओके आ घंटे 1.5 घंटा लागिबो 1.5 घंटा हेछि ओके गोटे मिनिट ब्रेक देबे रिविजन जहार भी दरकार एलटीएस सिलेबस वाइज याकू देखि देबे बेस्ट रहइबो ओके तापर अछि क्लासरूम डाइवर्सिटी केमते हेबा दरकार चलो क्लासरूम डाइवर्सिटी मीन्स कौन डाइवर्सिटी माने विभिन्न लैंग्वेज पिला थिबे एबिलिटी रो थिबा कल्चर रो पिला थिबे डिफरेंशिएशन से सब को नै कि एटा डाइवर्सिटी देखेबा लर्निंग स्टाइल नो ए सब नो सेम बैकग्राउंड रो नो डिफरेंस रेले डाइवर्सिटी आसीबो ओके इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट कहा को रे इंक्लूसिव एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर सब पिलांकर समान भाव जो शिखिबार जो सुजोग रही है सी है इनक्लूसिव एजुकेशन है जार जी आवश्यकता अनुसार से हिसाब से दि जाए इंपोर्टेंस दि जाए व्हिच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव इन डाइवर्स क्लासरूम को स्ट्रेटजी विशेष भाव में बेस्ट रहिबो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन माने सब पिलांक समान टाइप रो नो भिन्न भिन्न जतकी जार इंस्ट्रक्शन माने आवश्यकता अनुसार से इंस्ट्रक्शन दि जाए है different instruction is best option C is correct. A diverse classroom assessment should be केमती हमारा दरकार a diverse classroom रे assessment केमती हवा दरकार uniform all student हवा दरकार ने standard जेठी negative अछि variety अलगा अलगा हवा दरकार inclusive हवा दरकार option C is correct. Children with different learning needs should be केमती हवा दरकार option C is correct. which of the following is a barrier inclusive education कोटा barrier में बाधक रिजिड करिकुलम रहिबा उचित नो फ्लेक्सिबल करिकुलम टा बेस्ट ओके कॉपरेटिव लर्निंग रहिबा टीचर सेंसिटिव रहिबा यूज ऑफ टीचिंग एड्स करिकुलम नो एनसीए मना करसे रिजिड करिकुलम नो फ्लेक्सिबल केमती हवा दरकार जोटे कि कल्चर एलिमेंट पिलाकर जोटे कल्चर सामाजिक विषय आधारित होइतबा लिंग्विस्टिक तांको जोटे लैंग्वेज जणा थबो से रिगार्डिंग हेतबा दरकार मल्टी लेवल क्लासरूम कहा को रिक्वायर करछि punish non-Hindi speaker ना negative अच्छे encourage of the code switching ये तो ठीक अच्छे encouraging ignoring करी हबनी single language use करी हबनी option B is best right inclusion means क्या को होइछे inclusion right inclusion admission to children with the disability only जोठी अछि काटी दियो सीधा कथा treating all children the same समान टाइप रो treating करिबा ना inclusion means
recognize and accommodate diversity. Diversity को माने सेठी adopt करा जाए. Inclusive বা inclusion education रे, right? Recognize and accommodation diversity को, right? Next ଯିବା 10 number. Which one is the good classroom practice and diverse learner? Which one is the good classroom practice and diverse learner? कोटे कोटे good classroom using visual ହେଇଥିବା ଦରକାର, auditory ଥିବା ଦରକାର, body kinesthetic ଯୋଉଟା କି movable ହେଇ ପାରତା ଦରକାର. ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ସି ଟି ବେଷ୍ଟ ଅଛି. ଲେବଲିଂ ତ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ, ଗିଭିଂ ସେମ୍ ହୋମୱାର୍କ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ସମାନ ଦେଖି ପାରୁନି ଯେ ତାକୁ କଣ ଦେଖିବା ସେମ୍ ଟାଇପର ଦେଲେ ହବନି. କମ୍ପେୟାରିଂ ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ. The option C is correct. A teacher can address diversely. A teacher can address diversity by, it is negative. Using learner centered pedagogy, option B. देखिए बाकी सब पॉइंट राइट. यूजिंग हाँ ସେଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି. ignore the negative, only negative. Option B is correct. Which of these support classroom inclusivity? Support classroom inclusivity. Fixed sitting, no. Monolingual भी negative, माने गोटे language यूज करबा. एक्सक्लूड करबा नुहे, इंक्लूड करिया फ्रॉम एक्टिविटी. पिला को इंक्लूड करा जाय, सब एक्सक्लूड करा जाय एक्टिविटी रो, ये भी नेगेटिव. तो ऑप्शन पियर ट्यूटरिंग दा बेस्ट रहइबो. निजो संग साथी जरिया भी सेमने से एमती सिखा एठी इंक्लूड करबा दरकार. जेंडर सेंसिटिव रिक्वायर काहा को करे, गिविंग मोर अटेंशन टू बॉयज, एटा जेंडर वाइज नै से जो पार्शियलिटी हे जबो. अवॉइडिंग डिस्कशन ऑन जेंडर पर डिस्कशन करबा. जेंडर सेंसिटिव को पार्टिसिपेशन, टीचिंग सेपरेटली. प्रमोट इक्वल, ऑप्शन सी टा बेस्ट हो. इक्वल पार्टिसिपेशन ऊपर फोकस करबा. पुओ झियो समस्त सबुतरे समान भाव रे इक्वल भाव रे पार्टिसिपेशन करंतु. यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग मींस यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, डिजाइन करिकुलम फॉर द एवरेज स्टूडेंट पे एटा हेदै. यूनिवर्सल ना को कहै देख प्रोविजन ऑफ मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी टा बेस्ट है. एवरेज स्टूडेंट पे नो प्रोवाइड मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग. इनक्लूसिव एजुकेशन रे एटा ही प्रमोट करे, कारण विभिन्न वर्ग रे पिला थांते. प्रोवाइड मल्टीपल वे ऑफ लर्निंग, राइट. ऑप्शन स्टूडेंट फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज नीड. स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज नीड केमती हेबा दरकार. स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज नीड को बेस रे कल्चरल वैल्यूएशन एंड सपोर्ट बेस रे हेबा दरकार. माने एठी एक्सक्लूजन कहै, इंक्लूजन हबो. स्पेशल ट्रीटमेंट नो, पनिशमेंट नो, ए सब हबो ना. ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हिच अप्रोच द बेस्ट हेल्प कैटर टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी, को अप्रोच माने अप्रोच टा विशेष रे बेस्ट. पासिव तो नेगेटिव वर्ड, रोट नेगेटिव वर्ड, ओनली नेगेटिव वर्ड, बाकी गोटे रहला कोलैबोरेटिव लाइन, राइट. रियल लाइफ कंटेंट कोठी यूज करा जाय. सिचुएशन गोटे ब्रिज भाव रे काम करे, सेतु भाव रे काम करे, कल्चरल डाइवर्सिटी करिवारे, राइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाट द एसेंशियल फॉर द इंक्लूसिव टीचिंग, व्हाट द एसेंशियल कोड निहाते पर एसेंशियल देखि देलो. एसेंशियल कोड आसीबो. ऑथोरिटेटिव भी नेगेटिव वर्ड, फिक्स भी नेगेटिव, फिक्स लेसन प्लान भी नेगेटिव, फ्लेक्स सेंसिटिविटी आसीबा दरकार इंक्लूसिव एजुकेशन रे, राइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम केमिति रहबा दरकार. प्रॉब्लम भाव रे ना बर्डन भाव रे ना अपॉर्चुनिटी भाव रे. थोर हम किछि किछि सिखि के सेटा होछि हम अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथन हबा दरकार, राइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. रेस्पेक्टिव क्लासरूम डाइवर्सिटी प्रमोट काहा को करे. रेस्पेक्टिव क्लासरूम डाइवर्सिटी, क्लासरूम भीतर जो विविधता विभिन्न वर्ग पिला रहउछि सेटा काहा को प्रमोट करे. डिसिप्लिन को प्रॉब्लम करछि ना, स्टाइप करबो ना. इक्विटी माने पिलांकर आवश्यकता अनुसार ताको रेनफोर्स दबा बा हेल्प करबा. एंड इंक्लूसिव एजुकेशन ता ऊपर करबा, राइट. इन फॉर आंसर भी नो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलो, which one is the inclusive classroom practice, which one is inclusive classroom practice, which one is the inclusive classroom को practice किए करूचे. encouraging group discussion, ये भी encourage करचे inclusive classroom, right. ऐसे
ऑप्शन बी करेक्ट डिस्कशन विशेष भाव एनकरेज करिवो इंक्लूसिव क्लासरूम राइट नेक्स्ट ए टीचर नोटिस ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ लैंग्वेज लैंग्वेज सहित जदि गोटे स्ट्रगल करछि ताहले हम कोन करबा इग्नोर कर देबा जमा नुआ पनिश कर देबा जमा नुआ विजुअल यूज विजुअल एंड सपोर्टिंग टूल्स ता आवश्यकता अनुसार ताको टूल्स जोगाई देबा राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट आ ताको छाड़ी के पळा कहबा जमा नुआ ओके राइट हाउ कैन ए टीचर प्रमोट multilingual awareness how can a teacher promote multilingual awareness केमिति भाव प्रमोट करछि multilingual awareness को by using a single language ना प्रमोट करी हबन मल्टीलिंगुअल एटी सिंगल लैंग्वेज रे केमते मल्टीलिंगुअल हबो टीचिंग अबाउट द डिफरेंस कल्चर ये भी हे पारिबो डिस्करेज गुटे नेगेटिव वर्ड प्रमोटिंग ऑल गुटे नेगेटिव वर्ड ऑप्शन बी इज करेक्ट टू इन द क्लास ए टीचर मस्ट केमते हबा दरकार प्रोवाइड ये तो भलो अछि इग्नोर करि परिबनी ओनली गुटे नेगेटिव वर्ड टीचर फास्ट हबा भी नेगेटिव वर्ड ओके टीच फास्ट सेमिति नो एक्स्ट्रा सपोर्ट रहिबा दरकार टाइम देकी राइट जेहेतु से डिसेबिलिटी पिला मानक कौन हो जमी एग्जाम रे भी अधिक टाइम दिया जाए सेमती क्लास रे भी एक्स्ट्रा टाइम देबा दरकार सपोर्ट में राइट व्हिच इज नॉट ए चैलेंज इन डाइवर्स क्लासरूम कोड चैलेंज नुह हले वेराइटी पेस ऑफ लर्निंग एटा माने विभिन्न वर्गर पिलांकर जो स्पीड अछि सिखिबार सेटा रहइबो वेराइटी पेस ऑफ लर्निंग सेटा को हम डाइवर्स बा चैलेंज भाव रे नॉट ए चैलेंज not a challenge okay cultural difference similar learning of needs sorry से तो diverse classroom को promote करिवो language barrier options not a challenge हला similar learning leads जोटा रहउची ताको हमें को भाबरे not a challenge भाबे नबार नाही right option C is correct children from underprivileged background may be face केमते करबा दरकार children from underprivileged background may be face better learning condition language and cultural barriers and say option B is correct answer infer from the diversity background children जदि विभिन्न अलग अलग बैकग्राउंड आछिंदी से माने कोन फेस करबे ताले लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर को से माने फेस करबे ऑप्शन बी इज करेक्ट टू सपोर्ट स्टूडेंट विथ द हियरिंग इम्पेयरमेंट जदि गुटे हियरिंग इम्पेयरमेंट पिला अछि ताले केमि ताको हेल्प करबा टू सपोर्ट स्टूडेंट टीचर शुड कोन करबा दरकार इग्नोर तो केबे करबनी लाउडली खाली कहबे ओनली नेगेटिव वर्ड तो विजुअल एड्स ताको जगेले से ता देखि देखि लिखिबो सुनी पारने जदि देखि से लिखि पारिबो ऑप्शन बी सी इज करेक्ट व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर नीड्स व्हाट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड डाइवर्स लर्नर नीड्स बेस्ट वे कोड आसीबो ऑब्जर्व एंड इंटरैक्टिंग विथ देम ये बेस्ट ऑप्शन अछि पुनिश द नेगेटिव स्ट्रिक्ट नेगेटिव वर्ड गिविंग सेम नोट्स नो ऑप्शन बी इज करेक्ट राइट नेक्स्ट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वालिटी इन एजुकेशन कोडा गुटे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को असूचित करछि इक्वल टीचिंग मेथड फॉर ऑल समान समस्त को नुह यूनिफॉर्म ग्रेडिंग नुह कस्टमाइज सपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड जहार जेमती नीड अछि ताको से आंसर सपोर्ट द इक्विटी बोली के कहै छै कहा को अवॉइड करबा दरकार इन डाइवर्स क्लासरूम रे कहा को अवॉइड करबा दरकार कोलैबोरेशन पॉजिटिव वर्ड ताको छाड़ीबानी फ्लेक्सिबिलिटी पॉजिटिव वर्ड स्टेरियोटाइप जो माने पुआ माने झाड़ू करन सॉरी जे माने झाड़ू ए पुआ माने या करन से स्टेरियोटाइपिंग एक कथा को उठेबा नाही आबरे कंट्रोवर्शियल ऑप्शन सी इज करेक्ट द ट्राइबल बैकग्राउंड ए टीचर शुड बैकग्राउंड जदि आसी ताको केमते हम सपोर्ट करिया ऑलिंग मेटल सहित ओके राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट इंक्लूसिव पेडागोजी इज बेस्ड ऑन केमते हबा दरकार कंपटीशन मोड तो नेगेटिव वर्ड सेग्रीगेशन में नेगेटिव वर्ड पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन द बेस्ट वर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन समस्त पार्टिसिपेशन करिके सिखिबा यूनिफॉर्म हो समस्त करता यूनिफॉर्म माने सिखिबार बेग समान हो आ समस्त को समान भाव ऑप्शन सी इज करेक्ट गिफ्ट सेमन को एनरिचमेंट एक्टिविटी दिया जाय किछि सिखाबे एनरिच प्रोग्राम मध्ये करा जाय ओके भलो पिला मन का भाई when a teacher accepts student in difference it leads को आड को लीड करछि पॉजिटिव क्लासरूम जदि सर सब गुडा को आक्रा माने एक्सेप्ट कर नउछंती सेटा पॉजिटिव क्लासमेट एनवायरनमेंट गुडे क्रिएट हेबो राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट
A teacher who is sensitive to gender diversity. A teacher who is sensitive to gender diversity will କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏ teacher encourage all gender equally encourage all gender equally negative word ଆସିବ prefer boys over girls ନା ଅଛି okay right classroom mixed habitat ଯୋଉଠି ପିଲା ଥିବେ classroom ଥିବ ସେଠି କୋଉ method ଟା best କରିବ the rote memory is negative lecture negative homework based learning you know cooperative learning right option B is correct which technique method be multilingual classroom ପାଇଁ କୋଉଟା best ରହିବ method translingual single language ସିଏ ବି ନୁହଁ multilingual ଅଛନ୍ତି ଆମେ avoid କରିବା ବି negative word ଆମର ଏଠି ବି only ଟା negative word translingual method suppose multilingual ଏ language ରୁ ସେ language translate କରିକି ଶିଖିବା ଦରକାର tutoring help କାହାକୁ କରେ help in promoting promote କରିବେ ନୁହଁ independence को से promote okay widening the achievement gap widening achievement को से promote करियो और support slow learner को supporting reducing sorry supporting the slow learner right option C is widening the achievement gap achievement जोटे gap एठी ताको आउ टिके चौड़ा कर दबो ना ना ताको कमाइबो एटा option B टा नेगेटिव option C is correct includes next inclusive children with special need in the regular school promotes inclusive children school promotes okay inclusive of children with the special needs regular school promote କାହାକୁ କରୁଛି so କରୁଛି right next which one of the example of the cultural diversity ହେଲେ କ'ଣ ହବ different language custom ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ option B is correct what should be avoided in a classroom diverse classroom କାହାକୁ avoid କରିବା ଦରକାର ହେଲା what should be avoided in diverse classroom ରେ encouraging expansion encourage the good positive word से ରହିବ celebrating difference को celebrate କରିବା group work भी positive word labeling ଗୋଟେ ଦରକାର labeling କରିବା କିଛି multi sensory teaching strategy address କାହାକୁ କରେ multi sensory teaching multi sensory only लिखिदियो only ଯେତିକି ଜାଗାରେ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ସେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ standardize ବି one type of negative word diverse learning style को ଆମେ approach କରିବା right teacher bias in the diverse classroom leads to କୋଆଡ କୁ ନିଏ teacher bias in diverse classroom teacher bias discrimination ଆଡକୁ ନିହାତି ଭାବରେ biasness କରିବ ପୁଅ ମାନେ ଭଲ ଝିଅ ମାନେ ଖରାପ ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ପୁଅ ମାନେ ଖରାପ ସେ ତ ନିହାତି discriminate କଲେ ହେଲା ଭେଦଭାବ କଲେ to make classroom inclusive inclusive the teacher should କେମିତି ହେବା ଦରକାର to make classroom inclusive ହେଇଥିବ ତାହେଲେ teacher କେମିତି ହେବା ଦରକାର value all student background को value ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ encourage dominate culture ନା dominate no best ଅଛି right which of the encourage the inclusive value which of the following encourage the inclusive value को किए promote କରୁଛି encourage କରୁଛି street info ନୁହଁ group ଯେରେ ଗୋଟେ ସହିଷ୍ଣୁତା ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ଆସିବ ranking ତ କରିବାନି option C is correct learning diversity include କୋଉଥିରେ ରହିବ include culture ability gender ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ରହିବା ଦରକାର right next which one of the following which one of the support equity in classroom evaluation equity ରହିବ which one of the support equity in classroom evaluation କେମିତି one test for all ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ one test oral and written option ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ଯାର equity ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିପାରୁନଥିବ ତାକୁ orally କରେଇବ ସେଟା ତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବ ତାକୁ written କରେଇବ ହେଲା equity ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ସେ ସପୋର୍ଟ କଲଚରାଲ ବାଇସ୍ କେମିତି କଲଚରାଲ ବାଇସ୍ କୁ ଆମେ କରିବା ଲୋକାଲ ଟ୍ରାଡିସନ କୁ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିପାରିବାନି ୟୁଜିଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପସନ B ଇଜ କରେକ୍ଟ ଅଛି ରାଇଟ
How can a teacher encourage the participation from all student? How can a teacher encourage participation from all student? Encourage କେମିତି କରିବା? language ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପଚାରିବି। ଅପସନ ବି ଟା ତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଇନକ୍ଲୁସିଭ କ୍ଲାସରୁମ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରେ? କମ୍ପିଟିସନ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ। ସେମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରଖି ହେବନି, କିଛି ଭଲ ପିଲା ଥିବେ, କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଗତି କମ୍ ଥିବ, ସମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସମାନ ରଖି ହେବନି। ପିଓର ପ୍ଲେଜର, ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହି ରେସପେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ। What is the key to the managing diversity in the classroom? What is the key of managing diversity in the classroom? କୋଉଟା ରହିବା ଦରକାର managing diversity in the classroom? strict discipline ରହିଲେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ, test is a negative word. Adapting the sensitivity is negative positive word. Right option C is correct. How can teachers make student from diverse knowledge? Is correct. Who is the following diversity in the class? What would ବାଧକ ଦେଖିବ diversity in the classroom? Culture bias ହବା ଦରକାର ନୁହେଁ, option C ଟା ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ଆସିବ। Right. Student from different language background ର ଯଦି କୋଉଟା ଆସିବ? Must benefit from different background ରୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ punishment for using native language ନା punishment ଦବା using native language यूज करके monolingual bilingual ଯାହା ହବ bilingual ବା multilingual best C is correct କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି inclusive education। which strategy best for diverse classroom? କୋଉ strategy ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ? multiple modes assignment ରହିବା ଦରକାର, multilingual ବା multiple modes। ଓକେ ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ चलो नेक्स्ट। A key characteristic of the inclusive classroom. Key characteristic of inclusive classroom कौन ହେଇଥିବା ଦରକାର? Characteristic inclusive classroom collaborating cooperation option C is correct. culturally responsible teaching କାହାକୁ require करे? integrated student and cultural context को integrated student ସବୁ ମିଶିକି ଯୋଉଠି ଥିବେ avoid ତ କରି ହେବନି, foreign only negative। right option B is correct. differentiation instruction is କାହାକୁ ହେବା ଦରକାର? differentiate instruction being equal but varied support ରହିବା ଦରକାର। only negative word provide the same task ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, option B ଟା ବେଷ୍ଟ ଆସିବ। reducing contest କୁ କମାଇ ଦେଲେ ହବନି। okay differentiate instruction means differentiate instruction okay equal but varied support जो पिलार जेमती support दरकार ताको सेमती दबा ହେଲା। equal teacher uses local festival at the teaching inclusive and contextual learning को promote करोसी। right option C is correct. to student to help a student with ability a teacher should केमती करवा दरकार ହେଲା। give length हम दबा न जमानो avoid giving avoid करवा feedback देवा पे ignore बाकी तो सब नेगेटिव अछि, ऑप्शन बी टा ही गोटे पॉजिटिव जिंस अछि, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट सेलिब्रेट डिफरेंस कल्चरल डे इन स्कूल रे जदि हम डिफरेंस कल्चरल डे सेलिब्रेट करबो ना कल्चर which activity support linguistic diversity in classroom? which activity support करछि linguistic classroom रे? next discourage multilingualism discourage नाही encourage करछि गोटा language translation game। right थांते तो language translation game टा गोटे सपोर्ट करिवो language linguistic diversity को। right option education means equity means जहार जति आवश्यकता सही अनुसार ताको सपोर्ट दबा। ओके सेम रिसोर्स फॉर ऑल नुहो, सम रिसोर्स जे देखि पारने भी ताको से दूसरा उपकरण दबा सिए त नुहो, नो एक्स्ट्रा हेल्प एनीवन एटा भी नुहो, एटा भी हबनी। राइट टू इंडिविजुअल एंड इट्स जहार जति आवश्यकता अनुसार ताको सही आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लासरूम डिस्कशन इनवॉल्व डाइवर्स पर्सपेक्टिव हेल्प स्टूडेंट कोडा स्टे साइलेंट पॉजिटिव नेगेटिव आछिबे जदि प्राय 90% क्वेश्चन सॉल्व हे जेबो। रिजेक्ट डिफरेंशिएशन सॉरी रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन
इसको रेस्पेक्ट दबा इनक्लूसिव विभिन्न वर्ग जो पिला अच्छे सम्मान करियो द प्राइमरी गोल ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन द फर्स्ट डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी ऑप्शन बी इज करेक्ट जेंडर बायस इन टीचिंग मटेरियल कैन बी अवॉइडेड केमती अवॉइड करा जिवो ऑल वर्ड अवॉइड फीमेल कैरेक्टर को ऐड करके नो stereotyping role करके यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड इमेजेस यूज जेंडर न्यूट्रल जेंडर को सेमती किछि बायस हो नथिबो से लैंग्वेज यूज करबा ओके राइट इमेज यूज करबा ऑप्शन 1 इज करेक्ट लर्निंग स्टाइल इन डाइवर्स क्लासरूम इंक्लूड कहा को करे विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेसिस सब गुडा को इंक्लूड करे प्रोवाइड चॉइस असाइनमेंट हेल्प कहा करे प्रोवाइड अ चॉइस इन असाइनमेंट हेल्प एड्रेसिंग इंडिविजुअल नीड्स को सेमने एटी करा जाय अछि लिमिट कर दबा क्रिएटिविटी को कंफ्यूजन क्रिएट करबा रिड्यूस करबा ये सब नेगेटिव वर्ड अछि यूजिंग स्टूडेंट पोर्टफोलियो इन डाइवर्स क्लासरूम हेल्प डाइवर्स क्लासरूम हला कौन करा जाए ट्रैकिंग इंडिविजुअल हला राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट टू मिसबिहेव अंडरस्टैंड द कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड ऑप्शन वाइज इज बेस्ट अछि चलो इमीडिएट पनिशमेंट नो हो पब्लिक स्टेमिंग नो हो लज्जा नो हो एक्सपोजर नो हो ओके राइट ऑप्शन 1 इज ए इज करेक्ट right what are the cultural competence in teaching involvement what are the cultural competence in teaching involves कौन हवा दरकार memorize नुह stereotype नुह repeat and adapting the cultural difference को हमें adopt करिए ऑप्शन सी इज करेक्ट student with language barrier may be needs को promote करूचे peer assistance and simply language peer assistance and simply language ऑप्शन बी इज बेस्ट अछि एक्सक्लूड तो करा जाय पारे ने एक्टिविटी मोर पनिश अधिक दंड दबे ये भी नेगेटिव व्हिच प्रैक्टिस रिड्यूस द बायस को कोड प्रैक्टिस रिड्यूस करियो बायस को ओपन टैक्स देले भी बायस बेस हो एटा ओनली नेगेटिव वर्ड कंपेयरिंग भी नेगेटिव वर्ड स्टेट भी नेगेटिव वर्ड राइट स्टेट रैंकिंग डाइवर्स क्लासरूम टीचिंग शुड बी केमती हवा फ्लेक्सिबल इंक्लूसिव हवा दरकार which is an example discrimination in classroom which is an example of discrimination in classroom कोड अगर बेस्ट example of discrimination in classroom negative encourage करबा discrimination in classroom अच्छा discrimination गोटे करूथबा हां discrimination होने 22 ऑप्शन सी टा ही एठी आंसर आसीबो कारण इग्नोर करा जाउछ वीकर सेक्शन स्टूडेंट को जोठी डिस्क्रिमिनेशन करा जाउछ ऑप्शन सी इज बेस्ट आसीबो to build self confidence देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस केम दे आसीबो इंडिविजुअल अचीवमेंट राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट लैंग्वेज डाइवर्सिटी शुड बी केमती हेबा दरकार लैंग्वेज डाइवर्सिटी रेस्पेक्टेड हेबा दरकार सपोर्टेड हेबा दरकार ऑप्शन सी इज करेक्ट cultural inclusivity in textbook can be improved by cultural inclusivity by in the textbooks can be improved by only negative छाड़ दियो नेक्स्ट inclusive story from the varied background या को include करबा ये तो बेस्ट अछि ऑप्शन बी ही करेक्ट हबो अवॉइड करबानी हाइलाइटिंग द वन कल्चर गोटे कल्चर को हाइलाइट करबा आ गोटे को करबानी ना नहीं सेटा बायसनेस हेतबो डाइवर्स क्लासरूम टीचर नो हो आज फैसिलिटेटर right what help learner express freely in diversity what help learner express their freely केमति हर learner freely express करि परिबे open and respectful environment हेतबा दरकार open and respectful authority and negative fear based environment दरकार नै one language यूज होतबो से भी दरकार नै multilingual हेतबा दरकार जे जो लैंग्वेज सुइटेबल लैंग्वेज कहि पारि दरकार when a teacher acknowledges every student background it leads to when a teacher acknowledges every student background it leads to inclusion and motivation right
which tool is the best for the understanding learning diversity? Which tool is best for understanding learning diversity? କୋଉ tool ଟା best? ନା observation and feedback form. Observation and feedback form ଟା learner diversity को promote କରିବ. Okay. collaborative way ରେ ହବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଯେମିତି କରାଯାଏ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭିଟି. Why should learning material to be adapted in diverse classroom? Why should learning material to be adapted in diverse classroom? केमिति material ଆମେ adopt କରିବା to meet differential learning need को ଆମେ base କରିକି ଆମେ ତାକୁ adapt କରିବା. You support student from the minority background. केमिति support କରିବା? Allow cultural right option negative silent discourage right. Next हम कौन कहिछि inclusion activity avoid करा जाय परिबनी, ऑप्शन बी ही करेक्ट. फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग इन क्लासरूम हेल्प. फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग कोडा को हेल्प करूछि. ओके. फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग इन क्लासरूम हेल्प अबेडिंग नुह, ऑप्शन बी टा बिल्डिंग कोऑपरेटिव स्किल. लाइक ऑप्शन बी टा ही बोल बेस्ट ऑप्शन अछि. What is the inclusive strategy for the student in different spaces of learning? पिला मन को जो सिखिबार बेग अलगा अलगा अछि, को strategy what inclusive strategy for the student for different पीडब्ल्यूडी पिला मन को तांका भी एक्स्ट्रा किछि टाइम टेबल आसन सेम टैक्स नो जे देखि पारने ताको देखि सेमते नो सिंगल स्टिक focusing only no, option B is correct. What in classroom equality? What is the teacher's role in promoting classroom equality? Koda, what is the teacher role promoting classroom equality? Teachers should rule meeting unique needs with the equal respect. Treating every student identically. Na ignoring exceptional case, option B the best. Right. Diversity in classroom enhance kaha ko kare? Enhance learning through the multiple perspective ये promote करे. Right. Cultural stereotype by teacher can result in केमती हेते cultural stereotype by teacher. Cultural stereotype by teacher can result inclusive learning केमती हवा दरकार मिसअंडरस्टैंडिंग बायस हेतिबो. कल्चरल स्टेरियोटाइपिंग कहै छै स्टेरियोटाइपिंग बाय टीचर ताले मिसअंडरस्टैंडिंग हबो ताले बायसनेस आसीबो. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबिलिटी इन क्लास ऑफ द प्रमोटिंग कोइ भाई प्रमोट अवेयरनेस पे ही सेलिब्रेशन करा जाउछि, जेतकी सब सेलिब्रेशन होछि. Right. Which strategy faster respect for the diversity in classroom? Which strategy faster use करा जाए? Promoting intercultural dialogue पे, multilingual development पे, which best? Next. And include classroom encourage का को करछि? Inclusive education, passive learner no active learner पे, fear based no active student engagement पे. Right option is correct. Allow student to choose their learning path promotes का को करछि? Allow student जोटा कि हमें क्वेश्चन allow student to choose their learning path promotes entrepreneurship and motivation. Right option C is correct. How can teachers reduce the dropout among the diverse learner भीतर जदि हमें ताको केमिति भाबरे dropout को कमेबा? Use relative content and continuous support रहबा दरकार, तेबे जाय कि पिला मन को dropout कमेबो. गिव पनिशमेंट देले तो 2 दिन रे छाडी की पळेबो, स्टैंडर्ड टेस्ट भी रहे ना. फोकस ओनली इज नेगेटिव. नेक्स्ट. चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट ताको केमिति भाबरे ट्रीट करबा दरकार. टिंग यूनिक पर्सपेक्टिव. राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट. The main goal of diversity education अनुसार जते विभिन्न वर्ग रे पिला छन तो डाइवर्सिटी एजुकेशन रहबा दरकार. टॉलरेंस को हमें will creating division, encouraging differentiation, building tolerance. Right option C is correct. Build करबे tolerance को and appreciation को, तेनु करी हमें एजुकेशन दिया जाए.
Student, student with ADHD, okay, ADHD যে কিছু সময় মনে রাখুଛି ভুলি যাଉଛି, attention deficit hyper disorder যে ADHD in diverse classroom benefit from ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ କଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଲଙ୍ଗ ଲେକ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଗ୍ରେଡିଂ ଦ୍ୱାରା ତଳ ତିନିଟା ଟୋଟାଲ ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ଭିଜୁଆଲ ଟାଇମ ଟେବଲ ADHD short task ମାନେ ADHD ସେ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମନେ ରଖିବେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯିବେ। attention deficit hyper disorder ଅପସନ 1 ଇଜ ଠିକ ଅଛି। In which classroom seating arrangement important in diversity management? Which classroom seating arrangement is important? Could you in the interaction by right option C is correct. To promote inclusive education को टीचर शुड केमती हो रखा रिजिड गुटे नेगेटिव वर्ड या को छाड़ दे बी कल्चरल लेसन से एम्पैथेटिकली अवॉइड बैकग्राउंड राइट ऑप्शन सी भी नेगेटिव अछि ऑप्शन बी टा ही बेस्ट लागु छी बी केयरफुली रेस्पॉन्स माने एम्पैथेटिकली तो एडी सर जाय छै ओके तो आउ सर बहुत गुटा आहरी क्वेश्चन अच्छे आहरी 20 पेज अच्छी चलो ताकू भी सारदबा 2 घंटा 400 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड आउ पाखापाखि 200 क्वेश्चन अच्छे ताकू भी कंप्लीटेड कर दबा 3 घंटा टोटल सीडी भी कंप्लीट ओके ठीक अछि चलो नेक्स्ट गोटे मिनिट ओके चलो नेक्स्ट assessment of learning is conducted केतेबेले करा जाय आउट वर्ष सारा नो ऑप्शन टर्म एंड रही करा जाय ऑप्शन सी इज करेक्ट द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग मेन पर्पस कोन सर्टिफाइंग अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिले तो सर्टिफाइंग अचीवमेंट पय करा जाय समेटिव असेसमेंट केतेबेले करा जाय समेटिव टर्म एंड रे करा जाय ऑफटा समेटिव होउची ऑफटा फोरटा फॉर्मेटिंग जोटा माने साप्ताहिक 15 दिन एमिति करा जाय क्लास एंट्री भी करा जाय क्लास एंट्री भी किसी क्वेश्चन पछाय सी भी आसी जबो राइट फोरटा फॉर्मेटिव ओके जे माने नियुक्ति करके बा तांको किसी कार्य आज आउट हला फॉर आउट हला ऑफ राइट लर्निंग ऑफ माने एंड रे करा जाय जोटा कि समेटिव राइट नेक्स्ट which of the following is not a feature of the assessment of learning of कोड गुटे फीचर नुह कहै feedback to improve learning feedback सेटी मिलेनी जोड़े फॉर्मेटिव ने मिले राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग हेल्प काहा को करे असेसमेंट ऑफ लर्निंग हेल्प इन ऑफ सर्टिफाइंग तो करा जाय जोटी सर्टिफाइड मिले सी होची सीडा राइट फाइनल एग्जामिनेशन इज इन स्कूल आर एग्जांपल ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन निहाती बारे सेटा समेटिव रे जेबो टर्म एंड एग्जामिनेशन जेतु ऑफ रे जेबो असाइनमेंट ऑफ राइट व्हिच टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर असाइनमेंट ऑफ लर्निंग को टूल टा यूज करा जाय स्टैंडर्ड टेस्ट जेमति 10th एग्जाम प्लस 2 एग्जाम से माने गवेषक माने रहिबे से माने क्वेश्चन बनबे ता टाइम टेबल आ गोटे रिजल्ट बारिबो सर्टिफिकेट दिया जेबो स्टैंडर्ड टेस्ट असाइनमेंट ऑफ लर्निंग मींस टीचर एंड पॉलिसी मेकर इशू भाई क्यों माने करन टीचर माने करन से माने करन सब द की फोकस कोन रहिबो की फोकस ऑफ असाइनमेंट ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन the key focus assignment of learning कोड लर्निंग आउटकम फाइनली जोटा फेल हैला सर्टिफिकेट पाइला न पाइला से रिगार्डिंग रहइबो कम्स रहइबो राइट which is not an objective assignment of learning कोड गुड ऑब्जेक्टिव नुह कहिजा माने assignment of learning रो ऑब्जेक्टिव राइट आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन
prediction future performance কোড আসিব আই মিন মিস কনফিউজ অলরেডি তো আনসার দেখা হলানি রাইট ওকে ঠিক আছে assignment of learning result are usually assignment of learning result are usually କେମିତି ହେବା ଦରକାର ହେଲେ quantified and reported ହୁଏ ସେଗୁଡାକ only the negative informal not communicated option C is best which type of question are obtained used in assessment of learning which type of question are obtained used of learning ଟା କୋଉ type of question use ହୁଏ right open ended and discussion based ନୁହଁ multiple choice and objective type এইটা ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ MCQ and objective type option B କାରଣ 10th exam ରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ 10th plus 2 exam କୋଉ type ର ଚାଲିଛି ଯେତିକି ଟର୍ମ and exam ବୋର୍ଡ exam ସବୁ ଏଥିରେ ଯିବେ ହେଲା ସमेଟିଭ ରେ ଯିବେ ବୋର୍ଡ exam are the example of assignment of learning ଟର୍ମ and ଯେତିକି ଆସେ ବୋର୍ଡ exam right next assignment of learning emphasize କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ what has been learned କଣ ଶିଖିଛି ସେ ତାକୁ ହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ right next which of the following statement is true assessment of learning এটা অফ ପଚାରୁଛି ପୁଣି ଆଥରେ conduct only by learning learn ଦ୍ୱାରା এটা conduct ହୁଏ ନାହିଁ feedback is immediate ମିଳେ ନାହିଁ ଏଠି grading या certification ମିଳେ option learning is measured କେମିତି କରାଯାଏ diagnostic ନୁହଁ periodically formatively ନୁହଁ periodically ମାନେ period କହିଲେ period ର end ରେ ହୁଏ ନହେଲେ ମଝିରେ ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି periodically okay right a key limitation of assessment of learning key limitation କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅପକାରିତା assessment of learning ର each focus on improvement focus କରେନି focus involves the student participation it does not add the learning process directly କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖିଦେବା option C ଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି right option C is correct in assessment of learning teacher role କଣ friend philosopher guide ତ ଅଛି ଆଉ guide learning strategy student achievement sorry option judge student achievement teacher guide ଏଠି judge କରିବେ କେବଳ ହେଲା student achievement କଣ ହେଇଛି ଗାଇଡ କରିବେ ବଟ୍ ଏଠି student strategy କୁ ନୁହଁ କୋଉ strategy ଆପଣ କେତେ measure କରିছে ବା କେତେ ପାଇছে ତାକୁ measure କରିବେ which of the following can be result assessment of learning which of the following can be result modify in teaching student ranking ଏଠି ମିଳେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କ ମିଳେ ବା rank କେମିତି ହବା ଦରକାର ହେଲା କୋଉ ଟାଇପ ର ନର୍ମ ବେରେଷ୍ଟ ମାନେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଟେବଲ ଯୋଉଟା ଅନୁସାରେ ପୁରା ହେଇଥାଏ ନର୍ମ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ନୁହଁ ରାଇଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ କୋଉଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଛି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ପାସ୍ ଏତିକି ନା ସେ ଗୋଟେ କି ଯେମିତି ଓଟିଇଟି ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ କେତେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ ତାର କିଛି ଥାଏ ଏଥିରେ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ which of these most aligned with the assignment of learning which of these is most aligned with the assignment of learning କୋଉଟା ଆସିବ which feedback ତ ଆସିବନି assignment of learning ରେ peer evaluation ହୁଏନି report card ଦିଆଯାଏ certification ଦିଆଯାଏ right assignment of learning focus primarily କାହା ଉପରେ focus କରେ learning potential no difficulty no outcome ଉପରେ learning output କଣ result ପାଇଲା ତା ଉପରେ focus କରେ what of the assessment includes annual school exam what type of annual school exam ରେ କୋଉଟା ଆସିବ ସେ ବି ନିହାତି ଟର୍ମ ରେ ହେଉଛି ତ ଅଫ୍ exam of when assignment of learning is done well it will କାହାକୁ measure କରିବ help to make promotion decision assignment is done well then help to making promotion ପାଇଁ option C is correct it helps to make promotion decision next which of the following is typically associated with the assessment of learning କୋଉଟା ଗୋଟେ following the typical associated assessment of learning after କୋଉଠି ମିଳେ report card ବା certificate ଦିଆଯାଏ option B ଟା best ରହିବ assessment of learning is primarily focused on assessment of learning major learning outcome ଯାହାକୁ ଦେଖାଏ ସେଇଟା ହିଁ option C is correct the most suitable time for assessment of learning most suitable assessment time କୋଉଟା ଆସିବ most suitable time assessment of learning ହେଲା assessment for time for the assessment of the term enter हुए at the end of the student period right option C is correct assessment learning is most commonly conducted through କେତେବେଳେ conduct କରାଯାଏ assessment of learning ଟା
कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन नो स्टैंडर्डाइज नो स्टैंडर्डाइज हाँ स्टैंडर्डाइज जोटा 10th एग्जाम जोटा कहउछन्ती स्टैंडर्डाइज टेस्ट हबो व्हिच करेक्शन नॉट ए टाइपिकल असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोटा गुटे टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक नो कंटिन्यूअस फीडबैक आसीबो नहीं एथिरे तो सेटा तार फीचर्स नो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो फीचर ग्रेडिंग इज ए मेजर फीचर ऑफ कार असाइनमेंट ऑफ ग्रेड प्रदान कर मार्क दिया जिवो रैंकिंग करा जिवो ए सब ऑफ रो आसीबो असाइनमेंट ऑफ लर्निंग द बेस्ट डिस्क्राइब ये को ओरिएंटेड ना प्रोडक्ट ओरिएंटेड ला परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्निंग फोकस ना रिफ्लेक्शन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोन परफॉर्मेंस करछे सेटा रिजल्ट हिसाब रे पाइबे सेमने आज असाइनमेंट ऑफ लर्निंग फीडबैक इज एनुअली जोटा दिया जाय सेटा को टाइप रे डिस्क्रिप्टिव एंड टाइमली समेटिव प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग नो इमीडिएट भी दिया जाए नहीं समेटिव रे दिया जाए लास्ट दिया जाए ओके समेटिव ब्रीफली दिया जाए राइट असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिजल्ट आर द मोस्टली यूज फॉर पेरेंट्स स्कूल अथॉरिटी ने ये सब गुडा सब जाना पड़छे नेक्स्ट आउ किछि क्वेश्चन देखि देबा असाइनमेंट फाइनल ग्रेड बाय दिया जाए इमिटेशन ऑफ लर्निंग देखि देबा इट इज नॉट एज इंडिविजुअल नीड्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके चलो और फोकस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग काबरे प्रोवाइड ग्रेड ऊपर प्रोवाइड करे कहा ऊपर प्रोवाइड करे एनुअल एग्जाम असाइनिंग ग्रेडिंग बाय राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट व्हिच वन ऑफ द असाइनमेंट ऑफ लर्निंग सब तो ऑफ रे क्वेश्चन अछि रिटन टेस्ट एग्जाम रे आ कोन अलगा अछि कि ऑफ लर्निंग रे सबटा का अछि आई थिंक ना फॉर लर्निंग रे किछ अछि देखि देबा अले मगे देउछि सबटा ऑफ लर्निंग रे अछि केते ऑफ लर्निंग रे कहइबे ला चलन नेक्स्ट क्वेश्चन बुझियो 50 पर क्वेश्चन चेंज देबो नियाते राइट चल 50 पर क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन चेंज अछि असाइनमेंट ऑफ जनरल एज यूथ में को मेक डिसीजन अबाउट द स्टूडेंट प्रमोशन हेल्प स्टूडेंट मॉनिटर एटा हबने एना तो प्योर लर्निंग नाही मॉनिटर देयर प्रोग्रेस ए प्रोग्रेस ता आसीबो ना कोन ऑप्शन बी मेक डिसीजन अबाउट द स्टूडेंट प्रमोशन ऊपर एठी डिसीजन लिया जाय प्रमोशन अबाउट +2 +3 प्रमोशन ही चलिबे सेम टाइप रो व्हाट्स द फॉलोइंग द लिस्ट यूज फॉर असाइनमेंट ऑफ लर्निंग रे कोटा लिस्ट यूज है ग्रुप डिस्कशन आज फॉर्मेशन यूज हो राइट in assessment of learning which data is emphasized process achievement कौन क्वेश्चन से डाटा ऊपर एम्फसाइज दिया जाए आउटकम ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज टाइपिकली कौन रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव रिपोर्ट एटा ग्रेड मिले एथरे व्हिच आई वाज स्कोरिंग द मोस्ट अलाइंड दिस लेटर ग्रेड परसेंटेज ग्रेड दी टाइप रो ग्रेड मिले सीजीपी जीपी एसजीपी जो दिया छै ग्रेड दिया छै सेम टाइप रो लेटर ग्रेड परसेंटेज ग्रेड दी टाइप रो ग्रेड मिले ए रिपोर्ट कार्ड टा कोडी रिपोर्ट कार्ड गोटे फाइनली जेतु ग्रेड सर्टिफिकेट तो सेने जेइबो स्टैंडर्डाइजेशन आर वाइडली स्टैंडर्डाइज असाइनमेंट गोटे स्टैंडर्ड असेसमेंट सेटा देखि तो सब तो आई थिंक असाइनमेंट ऑफ रे क्वेश्चन उडा रहे से देखि दो से सब केते असाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन करियो गोटे जदी आसिले गोटे आसीबो हला असाइनमेंट ऑफ 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 चला दो 100 टा थिबो 100 टा असाइनमेंट ऑफ लर्निंग हमारा आज को 100 पर क्वेश्चन चेंज थिबो हम चेंज कर दबा असाइनमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑफ लर्निंग ऊपर केते क्वेश्चन আছে ओके चलो नेक्स्ट पार्ट को पळेबा आउडे टेस्ट कंस्ट्रक्शन गोटे अछि यूनिट अछि टेस्ट कंस्ट्रक्शन जोटी लास्ट यूनिट अछि ओके राइट टेस्ट कंस्ट्रक्शन तैयार गेटिंग 50 क्वेश्चन अछि ये देखिबो यूनिट ओवर
right 2:25 minute ହେଇଛି step in constructing a test the first step constructing a test construct କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା first step କୋଉଟା prepare ହେବା blueprint preparation କରିବା option B is best ଆସିବ blueprint prepare କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ first step ଗୋଟେ construct କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ a good test ଯୋଉଥିରେ objectivity ରହିବ reliability ରହିବ usability ରହିବ validity ରହିବ ଏ ସବୁ ଗୁଡା କହୁଛି good test ଗୋଟେ key features okay right blueprint answer କଣ କରେ all topics are covered systematically କେମିତି କଣ systematically use ହବ କୋଉଟା ଗୋଟେ characteristic ନୁହଁ କହିছে ନଟା reliability ରହିବ objectivity ରହିବ usability ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କୋବିଲିଟି ରହିବ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଆସିବ ହେଲା ତ biasness ରହିବନି option C is correct तो quality of test measure what claim measure the quality of the test measure that what claims to measure is called जोटे क्लेम हेतिबो ताको मेजर जदी होउची ताहले कोन आसीबो सेटा ताको वैलिडिटी कुआ जाय जोटा को हम चाहू चली ताको जदी मेजर हे जाउ से हला वैलिडिटी कुआ जाय reliability test gives reliability रहइबो reliability means difficult high score to all students same result every time जोटे consistency सेटा reliability same result जदी आसिला थरे टेस्ट कलो जति आसिला सेकंड टेस्ट से हम आसिला थर्ड टेस्ट से समान आसिला सेम टी जति consistency रहउची सी हला reliability right just the item which are free from the personal judgment said to be the item which are the free from the personal judgment सेटा कोन आसीबो objectivity आसीबो objectivity हला फ्री फ्रॉम द पर्सनल जजमेंट तार किछि डिफरेंट जजमेंट जदि आसुची ताले तार विभिन्न टाइप रो जजमेंट आसीबो ऑब्जेक्टिविटी आसीबो राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज बेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग नॉलेज रिकॉल पई कोडा आसीबो बेस्ट रिकॉल पई ऐसे टाइप रो तो न ऑब्जेक्टिव टाइप रिकॉल पई ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ट व्हिच प्रोसेस ऑफ असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू इन टेस्ट परफॉर्मेंस एज ये प्रोसेस ऑफ असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू okay process of assign numerical value to test performance as process of assign numerical जो किछि वैल्यू दिया जाय ताको कोन कहवा जाय हला वैल्यू दिया जाय सपोज 5 मार्क दिया हला 10 मार्क देला किछि गुटे चला वैल्यू को स्कोरिंग कहवा जाय किबा एबीसीडी ग्रेड दिया जाय सेटा ग्रेडिंग कहवा जाय हला राइट प्रोसेस टा को इवैल्यूएशन कहवा जाय item analysis is done to केमती analysis is done to इनके डिफिकल्ट करिया पे एनालिसिस करा जाय आइडेंटिफाई द वीक लर्नर पे नो इवैल्यूएट द आइटम क्वालिटी केमती अछि सेटा पे मेजर करा जाय एनालिसिस करा जाय इवैल्यूएट द आइटम क्वालिटी राइट ऑप्शन सी इज बेस्ट द डिफिकल्ट इंडेक्स सो कहा को इंडेक्स सो करे डिफिकल्ट index how many students like the question test was the percentage of the student who answered the correctly difficulty level टा केमती चेक करा जाय ना केते पिला अटेंड करछन्ती करेक्टली सेटा को बेस करके difficulty level टा मेजर करा जाय जदि सब पिला अटेंड करछन त सेटा इजी रे पळेबो जदि 1% 2 क्वेश्चन पिलांकर जदि आंसर ठीक अछि कि कम पिलांकर आंसर ठीक अछि सेटा डिफिकल्ट जिवो राइट जोटा राइट नेक्स्ट जोटा मॉडरेट किछि पिला करछन 50% पिला करछन 50% करिना हाथि त मॉडरेट टिपिकल इंडेक्स निहाती भाबरे कम पिला केते आंसर करछन न पड़िबो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इंडिकेट कहा को करे बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मेंस ऊपर जदि हम किछि डिस्क्रिमिनेशन हाउ द क्वेश्चन ना ए सब जाना पड़नी स्टूडेंट द लेंथ ऊपर सेटा होबनी ऑप्शन 1 टाइम बेस्ट हाउ विल ए क्वेश्चन डिफरेंट बिटवीन द हाई एंड लो परफॉर्मर हला सेटा हाउ एंड लाइफ लो परफॉर्म ऊपर जदि हम ये करछन डिफरेंशिएट करछन सेटा डिस्क्रिमिनेशन को आजिबा इन ए टेस्ट रिड्यूस द चांस ऑफ गेसिंग को कम होय हला रिड्यूस द चांस ऑफ गेसिंग द बेस्ट फॉर्मेट सबुट कोडी कम करा जिबा हला गेस करिवार कोडी कम आसीबो मल्टीपल चॉइस जते मल्टीपल चॉइस सपोज चारटा ऑप्शन अछि चारटा हले तार माने गेस करिवार परसेंटेज ता मात्र 25% हला गेस करके देबारा ठीक से पांचटा हले 20%
আর যদি 12 ফন্টস রে এটি করেক্ট হবার চান্সেস 50%। ওকে ম্যাচিং করা কইলে চারটা থিব তো 25% কি দুইটা থিব ম্যাচ করিয়া মে সেই হিসাবে এসে টাইপ রে সেমতি কিছু নয় রেডিয়েশন তো চান্স অফ গেস করিকে সেটি করি হবো মল্টি এসে উপরে দেলে নদী বড়ি উপরে গোটে এসে দিয়ে দেলে তো বহুত কিছু গেসিং করি পারিব মানে কম গেস করি হবো মল্টিপল চয়েস রে আন এসে টেस्ट ইজ বেস্ট ফুল ले যেতবে एबिलिटी आसीबो एनालिटिकल टेस्ट जजमेंट टेस्ट रिलायबिलिटी केते आसीबो रिलायबिलिटी this subjective item are added test at the made shorter the number of items increases if question are asked the number of items increase jate korushanti hala tahle reliability increases habo right option C correct a test should be administrated in test should be kemti administrated haba darkar a noisy room re haba darkar fair and control eta hi haba darkar fair and controlled environment re haba darkar hala a scoring is prepared by after the test during scoring no after the test option before the test admission nai before test admission द्वारा ही already आरंभ माने पाई जाइथिबा दरकार right after the test परे ना scoring की ऑलरेडी जो की गुडा को देखिबे एसएससी एसएससी रखी जांदी से सब गुडा सेमने पूर्व थरे दित टेस्ट करके रखी जांदी କିଛି ନାହିଁ ତାର ଆନ୍ସର କି ଅଲରେଡି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ ୟୁଜେବିଲିଟି refers to it cost and easy to use it cost and easy to use student ଏଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ୟୁଜେବିଲିଟି କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି which of the following test in the most objectivity କୋଉଟା ରହୁଛି which of the following test is most objectivity କୋଉଟା ଆସିବ multiple choice MCQ right objective based तो रहिबो ओरल टेस्ट तो विभिन्न टाइप रे आंसर दे देबो शॉर्ट क्वेश्चन रे मन रो भाबी के किछि भी लिखि हेबो एथरे भी लिखि हेबो एथरे नाही जोटा ऑप्शन अछि हब हाई रिलायबिलिटी जदि रहुछि ताले कोन रहिबो हाई रिलायबिलिटी रहिबो हाई वैलिडिटी सहित हाई रिलायबिलिटी रहिबो राइट व्हेन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू इंप्रूव द टेस्ट which of the following help to improve the validity of the test कोड इंप्रूवमेंट करछि आसन द टेस्ट असाइन करबा टेस्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट को एटा भी ठीक लागुछि देखि देबा आंसर इज कोन अछि ऑप्शन बी इज करेक्ट राइट केमिति हेइतै आफ्टर द टेस्ट एडमिशन सुंदरा आइटम एनालिसिस के जे एडमिशन जे थे ताको द्वारा ही करा जाय था इन MCQ the wrong option are called wrong option कोन कहै छै डिस्ट्रैक्टर कहै छै डिस्ट्रैक्टर सेगुडा तुम बाट बणा करन तनको डिस्ट्रैक्टर कहै छै हला अरे करेक्ट आंसर टा को कोन कहै लास्ट वीडियो लास्ट कहै दबो हला ए टेस्ट दैट्स प्रोवाइड ए टेस्ट दैट्स प्रोवाइड सिमिलर रिजल्ट सिमिलर जदि सब बळे आसिले ताले सेटा कोन कहैबा ऑलरेडी कहि सारछि से होछि consistency বা reliability right reliability আসিব next the number of the question from each topic in test and determine as এটা কোউ টাইপ র কতটা क्वेश्चन আসিব সেটা ব্লুপ্রিন্ট রে মেনশন করা যায় রাইট অপশন সি ইজ करेक्ट subject test are criticized for lacking subject test are criticized for lacking कोथ में सब्जेक्ट टेस्ट क्रिटिसाइज करा जाए सब्जेक्टिव टेस्ट डिफिकल्टी में ना ऑब्जेक्टिविटी में ना टाइम एलोकेशन ना ऑब्जेक्टिविटी में ऑब्जेक्टिविटी तार सेमती आसीबनी ऑब्जेक्टिविटी जोटा हम मेजर करथवा सेटा ता आंसर सब देई हुएनी हला सपोज हम एठी सब्जेक्टिव टेस्ट उटे कहा जाय थे उटे माने उटे लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाय छै वर्तमान ऋतु अनुसार कहा जाय थे नदी बेडी संपर्क रे एक संक्षिप्त विवरणी लेख पिला तांग मन इच्छा रे तांको नदी ऊपर लेखि तांको कथा ए दिसटा गुटे ऑब्जेक्टिव आसीबनी हला टेस्ट और क्रिटिसाइज लैकिंग सेति में सेटा गुटे दुर्बलता लैकिंग रहइबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव आइटम रो एग्जांपल कोडा आसीबो हला सब्जेक्टिव आइटम रो ऐसे टाइप रो क्वेश्चन आसीबो ए हिल ब्लैंक्स मैचिंग टाइप रो ऐसे टाइप रो क्वेश्चन सब
In the test blueprint, weightage of the content refers to कौन कहबा नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर टॉपिक मार्क कलेक्टेड टू ईच टॉपिक मार्क कलेक्टेड कोठी कोन केते हिजे सेटा ही ब्लूप्रिंट रहइबो राइट ए बैलेंस टेस्ट इंक्लूडेड बैलेंस टेस्ट इंक्लूड कोठी रहइबो बैलेंस टेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑल कॉग्निटिव लेवल ना वेरी डिफिकल्टी लेवल बैलेंस टेस्ट का को कहा जाय टिके देखि दियो क्वेश्चन फ्रॉम द ऑल कॉग्निटिव लेवल हेतिबा दरकार सेटा को बैलेंस टेस्ट बोली को कहा कॉग्निटिव लेवल मेमोरी बेस्ड ए गुड स्टूडेंट विथ सेम मार्क्स नहीं हाँ सेटा ही हबो हाई एंड सॉरी a good test should be discriminate का को कोची good test discriminate well between high and low achiever भितरे high and low achiever भितरे ही discriminate create करे हला जो सबुठ भलो कर देला हला आगु जे फेल हे गला तो discrimination सही ही create हुए good test सेतले भी test length impact reliability भाई test रो length impact होकर reliability ऊपर making scoring easier reducing the objectivity increase the consistency जते टेस्ट रो लेंथ जते बढ़ियो जते रिलेटिव मध्ये कंसिस्टेंसी इंक्रीज हेबो ओके द मेन ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्शन मेन गोल कोन मेजर करबा एक्यूरेटली ओके गोल को राइट वेल कंस्ट्रक्शन टेस्ट आइटम इज लैंग्वेज शुड बी केमती हेबा दरकार वेल कंस्ट्रक्शन टेस्ट आइटम द लैंग्वेज शुड बी केमती हेबा दरकार सिंपल हेबा दरकार क्लियर भाबरे लेखा आइतबा दरकार right option B is correct which format allow to highest freedom in response which format allow to highest freedom in response which format allow करछि highest freedom जोठी freedom कर दिया जाय छै response तुमको देबा पय कोठी ऐसे टाइप क्वेश्चन ना मन इच्छा तुम लिखि परिबो आ कोठी लिखि परिबो ना जो माने ऑप्शन बी इज करेक्ट when constructing multiple choice item the correct option is कोन कहला correct option is को कोन कहै छै यही तो आसी गला और चला की कहा जाए आंसर की बोल के कहा जाए जोटा की बोल के कहा जाए और जोटा के रॉन्ग ऑप्शन को डिस्ट्रैक्टर बोल के कहा जाए an item said to be difficult if difficult आंसर केते कम पिला ही जदी आंसर करेक्टली देई पाला सेटा कोन कहा जाबा डिफिकल्ट लेवल बोल के कहा जाबा व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन आइटम टेस्ट आइटम रे कोडा को अवॉइड करा जीवा कोडा क्लियर डायरेक्शन रही कर अवॉइड करा जाय परिबो नाही एम्बिग्यूटी एंड ट्रिकी वर्डिंग को अवॉइड करबा दरकार ट्रिकी वर्ड सेमति किछ न रहबा दरकार हला स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्टैंड with a set standard used to compare student performance eta kon asiba criterion performance normal state is designated by normal state जोटी रैंक फैंक प्रदान हुए नॉर्मल जेमति कि रैंक प्रदान 10th एग्जाम प्लस 2 एग्जाम जेती सब रैंकिंग फैंक टाइम टेबल अनुसार हुए रूल नॉर्मल हुए नॉर्मल कंडीशन ता अनुसार हुए good choice item is distractor should be distractor केमती करे similar length of the plausibility था देखाय similar type रो देखाय कि distractor माने हमको बणा करिया को similar type रो देखाय length and pausing ई सब हुए तो state item should be match the test item should be match कोन student test item should be match का को मैच करे instructional objective I think option C is correct haba instructional objective right the best time for conduct item analysis the best time for the correct item analysis kon haba the best time for conducting item analysis best time of conducting analysis before teaching agro ame conduct kari paribeni after the grading dei sala pare no before student see the test if a student see the test see conduct अच्छा students अपने test before student the see test the option B after the grading the test अच्छा right option grading the test grading माने मार्क देई सला परे आइटम गुटा के एनालिसिस करबा समरी बेस्ट right option B which type of assessment is commonly used for the test construction validation
Which type of assessment is commonly used for test construction validation? Validation କେତେବେଳେ ଆସିବ? Okay. Which type of assessment is commonly used for test construction? Test construction validation. Validation item analysis କଲେ ହିଁ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ validation ଟା ଆସିବ. Okay. କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ. Usability is a test also consider. Time cost and easy admission ତାକୁ use ଅନୁସାରେ ଆସିବ. ହେଲା. C correct. Difficulty index of the 100% mean. Difficulty index 100% mean. 100% mean କ'ଣ? All student are answer correct ନୁହଁ. Difficult বা 100% difficult ମାନେ ସେଟା very few student are. Question was ମାନେ ବହୁତ କମ ପିଲା ଦେଇଥିବେ. Okay, sorry. Difficulty level 100%. ସବୁ ପିଲା correct ଦେଇଥିଲେ ସେଟା difficult level 100. ଯଦି 0% difficult 0% ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା 100% mean 100% ପିଲା attempt କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉଠି 0% ଦେଇଥିବ ସେଟା ଯେତିକି ପିଲା attempt କରିଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠି difficulty index ଦର୍ଶା ଦେଇଥାଏ. Which of the following improve the test reliability? ହେଲା କୋଉଟା ଗୋଟେ improve करे test reliability को. Reliability means consistency जोड़ा आसीबो. Increase the number of the good quality item ये भी आसीबो. Option C is which is the last step to test construction. Test construction रो blueprint तो कर देले item और writing लिखते administration and scoring. Tabulation analysis कोड आसीबो. Tabulation analysis blueprint first step तापरे item writing तापरे ताको score करिवा sequence 1 2 3 4. Okay. Item format is more time consuming to score. Time more अधिक consume कोडा हुए to score करिया में ऐसे टाइप रे अधिक समय लिखिया में पड़े तो कम देखि कम मार्क मिले 20 मार्क तो आंसर पे हमको माने आधा घंटा पर्यंत लिखिया में पड़े तो स्कोरिंग की शुड बी प्रिपेयर स्कोरिंग की केमिति बिफोर द स्कोरिंग की केते बेले प्रिपेयर करा स्कोर की randomly नो with student feedback अनुसार नो before the test करिया पूर्व ऑलरेडी जे एग्जाम बडी थे से ऑलरेडी करि सारि थे. What is the primary purpose of the test construction in the education? What is the primary purpose of the test construction for education? Grading difficulty hierarchy identify likeness assessment the learner objective accurately. Eight है. What is the primary purpose? Test हमें कौन पाए क्वेश्चन है assessment the learning objective accurately measure करिया में. 6 पेज रो थिला. धन्यवाद समस्त को. नॉनस्टॉप आई थिंक 700 पाखाबी क्वेश्चन थिला. ओके 600 कि 700 क्वेश्चन थिला सॉरी जाइसी जस्ट एग्जाम बिफोर टोटल सिलेबस को बेस करके रिवीजन क्वेश्चन थिला सीडी भी प्राय समस्त को पई हे जिवो याकू रिवीजन माध्यम रे पुणी आथरे भी देखि परिबे. ओके तो आज रो सीडीबी टाक को एटी एंड करिया परवर्ती पजरे आ गोटे टॉपिक को देखिबा कोडे टॉपिक को नै आसीबा मैराथन हिसाब रे कंप्लीट सिलेबस बेस रे. धन्यवाद समस्त को.